वो भारत माता के साथ बेईमानी करेंगे, इंडिया के साथ बेईमानी करेंगे। ये देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ये फेडरल स्ट्रक्चर पर सीधा हमला है, लोकतंत्र की हत्या है। बहुत बढ़िया। देखो 4 मिनट है, मुझे 2 मिनट काफी है, तो ज्यादा आवाज मत वहां से करिए। एक चुनी हुई सरकार दिल्ली में है, विधानसभा है, असेंबली है। सरकार, लोगों ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को वोट नहीं दिए हैं, एलजी को नहीं दिया है, एलजी को वोट नहीं दिया है। एलजी नहीं जाता वोट मांगने को, वोट मांगता है केजरीवाल या कोई मुख्यमंत्री या कोई सरकार, कोई नेता। 90% सीट। हाँ, आप 5 बार चुनाव हार गए, 6 बार चुनाव हार गए। आज भी दिल्ली के विधानसभा में आपके 5 विधायक नहीं है, और इसलिए आप दिल्ली विधानसभा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, आप कब्जा लेने चाहते हैं। सरकारें कौन चलाएगा? हम लोकतंत्र की बात अगर करेंगे, मैं वहाँ की बहुत से लोगों के मेरे मित्र हैं, भाषण सुन रहा था, मुझे लगा आपको पुराने दिन याद आएंगे, जब लोकतंत्र के बारे में बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे थे, लेकिन आपके आंखों में मुझे कोई लज्जा नहीं दिखी। मुझे 2 पंक्तियां याद आई गोपाल दास नीरज की, मत पूछो कि इस दौर में क्या क्या नहीं बिका। आपने तो सब कुछ बिक दिया है, पब्लिक सेक्टर से लेकर लोकतंत्र तक, विधायक, सांसद, सरकारें। मत पूछो कि इस दौर में क्या क्या नहीं बिका, आपके आंखों की। तो दिल्ली सेवा बिल को लेकर लगातार राज्यसभा में चर्चा जारी है। विपक्ष की ओर से लगातार सरकार पर सवाल उठाने के साथ साथ इस बिल का विरोध किया जा रहा है। सदन में इस वक्त शिवसेना उद्धव गुट से सांसद संजय राउत जो है वो अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें कि राज्यसभा में जो ये बहस चल रही है दिल्ली के अध्यादेश को रिप्लेस करने वाले दिल्ली सेवा बिल को लेकर, इस बिल पर बहस खत्म होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस को एड्रेस करेंगे जैसे ही राज्यसभा में डिबेट खत्म होगी। और ये राज्यसभा में जो डिबेट शुरू हुई है उसमें सबसे पहले अभिषेक मनु सिंह भी बोले, फिर सुधांशु त्रिवेदी बोले, उसके बाद राघव चड्ढा भी बोले हैं, रंजन गोगोई ने लेटेस्ट अपनी बात को कंप्लीट किया है और बहुत तीखी तल्ख चर्चा हो रही है। लगातार जो है वो सभापति महोदय जगदीप धनखड़, देश के उपराष्ट्रपति मौजूद हैं और इस वक्त जो है संजय राउत बोल रहे हैं। संजय राउत अपनी तरफ से बात रख रहे हैं, संजय राउत को सुन लेते हैं। अभी प्रधानमंत्री पुणे में गए थे, लोकमान्य तिलक का नाम से उनको सबसे बड़ा अवार्ड मिला। I requested the honorable members, and this is not a good tendency. सर मैंने क्या बोला? No, मैंने गलत क्या बोला? One second. It is प्रधानमंत्री जी Mr. Sanjay Raut, it is not that के नाम से पुरस्कार मिला। Okay, your time is over. लोकमान्य तिलक का No, Mr. Your time is over, Sanjay Raut, and when I say your time is over, I mean time for this address only. मेरा और 2 मिनट। Digley Singh जी, आप इतने सीनियर आदमी। सर मेरा और 2 मिनट। In this house, we must have respect for constitutional functionaries. Let us not create a system which is not good. नहीं। No. Priyanka. Message from Lok Sabha Secretary General. Message from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 7th August 2023 passed 1. The Anusandhan National Research Foundation Bill 2023 and 2. The Pharmacy Amendment Bill 2023. I lay a copy each of the said bills on the table. Shri Ghanshyam Tiwari, 15 minutes. आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आज इसकी बहस की शुरुआत करते समय
माननीय श्री अभिषेक मनु सिंघवी जी थे, उन्होंने चेतावनी दी बीजेडी को, वाईएसआर कांग्रेस को। उन्होंने कहा कि भाई आप इनके साथ जा रहे हैं तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आग दूर तक आएगी। लेकिन सभापति महोदय, वो मेरे मित्र हैं, जोधपुर के हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि वो केजरीवाल जी के पास वो गए हैं, इसलिए वो अपने आप को संभालें, क्योंकि केजरीवाल साहब के साथ जितने भी लोग थे जो शुरू में उनके साथ आए, चाहे प्रशांत भूषण जी आए, चाहे स्वर्गीय शांति भूषण जी आए, चाहे योगेंद्र यादव जी आए, चाहे कवि जी आए, या जितने भी लोग आए, वो सबसे पहले अन्ना हजारे आए। अन्ना हजारे की बात उन्होंने नहीं मानी, फिर किरण बेदी की बात उन्होंने नहीं मानी, फिर प्रशांत भूषण की बात उन्होंने नहीं मानी, फिर शांति भूषण जी की बात उन्होंने नहीं मानी, योगेंद्र यादव जी की बात नहीं मानी। सबको उन्होंने अलग अलग अपने स्थान पर भेज दिया। अब उसके बाद में 2 आदमी बच गए उनके पास में, वो श्री मनोज सिसोदिया जी बचे और सत्येंद्र जैन जी बचे। जब वो नहीं गए तो उन दोनों को जेल में भेज दिया। इस प्रकार से उनके पास फिर कोई नहीं रहा, क्या कोई नहीं रहा। इसलिए अब अगर कोई खतरा है तो खतरा कांग्रेस पार्टी को है, और कांग्रेस पार्टी उनसे सावधान रहे। और जहां तक ये कांग्रेस पार्टी का और आप पार्टी का साथ आने का सवाल है, सभापति महोदय, ये तो मुद्दा मैरिज है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि हमारा इस बिल में आप समर्थन करोगे तो हम आपके साथ आएंगे, और ये बिल लोकसभा में पास हो गया, अब ये राज्यसभा में पास होने वाला है। इसके बाद में ये मुद्दा मैरिज टूट जाएगी और ये केजरीवाल जी कांग्रेस के लिए सनीसर बनकर उनके सामने ही खड़े हो जाएंगे। इसलिए वाईएसआर कांग्रेस को या बीजू जनता दल को करने के बजाय कांग्रेस पार्टी स्वयं सोच ले कि उसका क्या हाल होने वाला है। दूसरी बात मैं करना चाहता हूं सभापति महोदय, उन्होंने बार बार एक बात कही कि साहब नेहरू जी के समय बात हुई, ये बात हुई। मैं सबको याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जो अमित शाह जी हमारे हैं, उनकी एक आदत है, वो लंबे समय से जो काम चल के आता है और जो पूरा नहीं होता, विवाद में रहता है, उसको पूरा कर देते हैं। जैसे आर्टिकल 370 नेहरू जी के समय से चलाया था, पूरा नहीं हुआ, इन्हीं सदनों में पास करके उन्होंने पारित कर दिया, वो पारित कराया, कराया सक्सेसफुली। और दूसरा, फिर इसी प्रकार से रामलला के, राम जी के मंदिर के बारे में बोल रहे थे, वो भी इनके गृह मंत्री के काल में पूरा हुआ। और ये विवाद जो पंडित जवाहर, ये विवाद जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से चला रहा था दिल्ली के बारे में, फेजल कमेटी बन रही है और डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया की कमेटी बन रही है, बाल कृष्ण की कमेटी बन रही है, और कई प्रकार से नगर परिषद बन रही है, नगर निगम बन रही है, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बन रही है। ये सारा काम करने के बाद में 15 वर्ष तक आदरणीय शीला दीक्षित जी के मुख्यमंत्री रहने के बाद, मदन लाल जी खुराना के रहने के बाद कोई विवाद नहीं हुआ। ये विवाद जब केजरीवाल जी आए उन्होंने खड़ा किया। अब उस विवाद का भी समाधान आज माननीय अमित शाह जी के हाथ से हो जाएगा और इस बार दिल्ली के बारे में कोई समाधान नहीं होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ दूसरी बात जो यहाँ पर बार बार उठाई गई, मैं उससे सैद्धांतिक रूप से मतभेद रखता हूँ। माननीय गोगोई साहब यहाँ पर बैठे हैं, वो भी सुनेंगे, बड़े बड़े वकीलों की बात भी हमने सुनी है। कौन सा फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट करता है? फैसला नेता करते हैं, पार्लियामेंटेरियंस करते हैं और संसद सदस्य करते हैं। मैं उदाहरण देकर कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि पहला संविधान संशोधन कब आया। पहला संविधान संशोधन इस सदन में आया जब 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी के रिजर्वेशन को स्ट्रेट डाउन कर दिया। उसके बाद पहला संविधान संशोधन आया और उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, उसका निर्णय जनप्रतिनिधियों ने किया और एससी और एसटी को हमने रिजर्वेशन दिया। दूसरा बहुत बड़ा प्रसंग आया माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस वाले सब भूल गए संविधान, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप भूल गए
जब साहबानों का केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, ऑनरेबल मेंबर्स प्लीज कीप साइलेंस, प्लीज कीप साइलेंस प्लीज। जब साहबानों का केस आया था और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि एक महिला को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, उस समय कांग्रेस पार्टी को साथ सूख गया था। वो इसी सदन में संशोधन लेकर आई और संविधान के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा। जो साहबानों के केस में पेश पलट सकते हैं वो आज संसदीय लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। इसके बाद माननीय सभापति महोदय और कितने प्रसंग आए, ओबीसी के आरक्षण का प्रसंग आया, ओबीसी के शिक्षा में रिजर्वेशन का प्रसंग आया और 9 सदस्यीय बेंच ने ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को निरस्त कर दिया था। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसी सदन में संविधान संशोधन करके ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिलाया और 53 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने बाद में निरस्त किया। इसलिए यह कहना कि यह संविधान की अवहेलना है, यह संविधान की अवहेलना भी नहीं है और यह लोकतंत्र की अवहेलना भी नहीं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, बार बार एक बात, इतनी जल्दी क्या हो गई थी, इतनी जल्दी क्या हो गई थी? भाई इतनी जल्दी सरकार को पूछ रहे हो तो यहाँ की सरकार को पूछो, दिल्ली को, उनको इतनी जल्दी क्या हो गई थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला थी रात को 12 बजे जाकर ताले तोड़ने लग गए। वो जल्दी कहाँ से आ गई थी? सब ये क्यों गई थी? तो ये इसलिए हुई। दूसरी बात, आज तक कोई भी दिल्ली की सरकार कोर्ट में नहीं गई, आदरणीय शीला दीक्षित जी भी नहीं गए, मदन लाल खुराना भी नहीं गए। ये किस लिए गए कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि हमको ये अधिकार मिलने चाहिए। ये अधिकार उसके पहले इनके पास नहीं थे तो ये गए, और गए तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ फैसला किया। जब ये कोर्ट के इतने ही भक्त हैं तो फिर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला मान लेते, तो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला भी नहीं माना। इसके बाद में ये गए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका केवल एक आख्यान पढ़ते हैं, बाकी 2 आख्यान जो भी माननीय मई जी ने भी बताए और माननीय गोगोई जी ने बताए, उनको पढ़ नहीं रहे। तो मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। और ये जो आया है आज, ये जो संविधान संशोधन का बिल आया है, ये ऑर्डिनेंस को जो वो करने का बिल आया है, ये सुप्रीम कोर्ट की इच्छा के अनुसार है। लेकिन किसी भी देश में सब जनप्रतिनिधि फैसला करते हैं। 1926 के पहले ब्रिटेन में महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था और वहां की प्रिवी काउंसिल ने तय कर दिया था कि अधिकार उनको नहीं मिल सकता क्योंकि कानून के अंतर्गत नहीं है। प्रिवी काउंसिल ने फैसला किया और फैसला करने के बाद में ब्रिटेन में महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। भारत में तो पहले से है। ये जितने निग्रो हैं इनको वोट का अधिकार अमेरिका में नहीं था, और अमेरिका के ब्लैक इन ब्लैक को अधिकार नहीं था, और इनको जो वहां की फेडरल कोर्ट ने मना कर दिया कि आपको अधिकार नहीं मिलेगा, आप वोट नहीं दे सकते, कानून में नहीं है, तो अमेरिकन कांग्रेस ने प्रस्ताव पास कर उनको वोट का अधिकार दिया। उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में हुआ, उसी प्रकार अन्य देशों में हुआ। इसलिए कोई सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि ये ठीक है कि ये गलत है, वो नहीं है। भारत में भी आज तक के 50 उदाहरण हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बदलकर हमने जनहित में निर्णय किए गए हैं, और ये दिल्ली के जनता के हित में सबसे बड़ा निर्णय माननीय अमित शाह जी लेकर आए हैं, वो हम करने जा रहे हैं। और इसलिए सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि ये बार बार कहना कि दिल्ली के साथ अन्याय हो रहा है, दिल्ली का एक विशेष स्टेटस है, उस स्टेटस को सबने माना है। अब दिल्ली भारत की राजधानी है। एक भी दुनिया के किसी देश का उदाहरण आप नहीं दे सकते कि उस देश के अंदर वहां की राजधानी है, उसका अलग प्रांत हो। यहाँ पर विदेशी आते हैं, यहाँ पर इतने बड़े सम्मेलन होते हैं, और यहाँ पर भारत सरकार कितने काम कर रही था। अभी भारत मंडपम इतना बड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, वो केंद्र सरकार ने किया है। अब युगे युगेन भारत है,
इतना बड़ा जो म्यूजियम बनने वाला है वो म्यूजियम भारत सरकार ही तो बना रही। तो ये इस प्रकार के काम दिल्ली में होना, दिल्ली में वार मेमोरियल बनना, दिल्ली में सारा काम होना, दिल्ली में सभी राजदूतों की सुरक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होना, ये सब काम हो रहे हैं। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये बिल की 3 बातें जो कही गई, न तो ये संविधान के विपरीत है, न ये लोकतंत्र के विपरीत है, न ये दिल्ली की जनता के विपरीत है। हाँ, ये विपरीत है कांग्रेस पार्टी के संदीप दीक्षित, जो कांग्रेस पार्टी के खास आदमी नेता है कांग्रेस के, उन्होंने दिया स्टेटमेंट कि ये बिल ठीक है। पंजाब के कांग्रेस वालों ने कहा बिल ठीक है, लेकिन ये जो टेम्परेरी मुद्दा मेरी हुई थी, केजरीवाल जी ने कहा कि हमारा अगर समर्थन करोगे तो हम इंडिया में आएंगे, और आज ये जो पास होगा ये मुद्दा मेरी टूट जाएगी और वो इंडिया INDIA जो है उससे ए अलग खत्म हो जाएगा और ये 4 ही बचेंगे। क्योंकि पहला काम ये करेंगे तो उनके खिलाफ ही करेंगे। उदाहरण के लिए दिल्ली में पहले इनको मेजोरिटी नहीं मिली थी और कांग्रेस ने समर्थन देकर केजरीवाल जी को बढ़ा दिया, बन गए। पर दूसरी बार जब आए तो कांग्रेस को पूरी को हजम कर गए, तो कांग्रेस साफ हो गई। इसी प्रकार पंजाब में कांग्रेस को साफ किया। अब आगे भी उनका उद्देश्य तो कांग्रेस को साफ करना है, तो हमारी कहाँ लड़ाई है। तो ये जो काम है, और इस प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि जितना सारा काम ये माननीय अमित शाह जी ने किया है और जो प्रस्ताव पेश किया है वो सब बातों को सोचकर किया है। और एक विवाद जो इतने लंबे समय से चल रहा था, पेयजल कमेटी बने, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया की बने, सरकारिया कमीशन बने, फिर संशोधन आया और 91 से लेकर 15 तक किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ। तो बोलने वालों को तो ये सोचना चाहिए था कि विवाद पैदा क्यों हुआ है। अब दूसरी बात, अगर ये संविधान के विपरीत होता तो इनको सुप्रीम कोर्ट में स्टे मिलता, वो स्टे भी नहीं मिला। ये वहां स्टे लेने गए, स्टे नहीं मिला। अब संविधान पीठ में गए तो संविधान पीठ इसको देखेगी। कर दिया उन्होंने कि 339A के अंतर्गत सारे कानून बनाने का अधिकार भारत की संविधान सभा को है, वो है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये धमकी देना दूसरे को, और एक बात मैं साफ रूप से करना चाहूंगा, माननीय चिदम्बरम जी ने एक बात कही कि जम्मू और कश्मीर को उन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया। मैं कई बार कहता हूं कि लोग अपने कृत्यों को भूल जाते हैं। आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश अलग हुआ, कांग्रेस ने किया। फिर तेलंगाना और आंध्र अलग हुआ, कांग्रेस ने किया। कितने प्रांत कांग्रेस ने किया और कांग्रेस ने तोड़े। तो क्या कांग्रेस ने राज्यों के अधिकार खत्म कर दिए थे? प्लीज, वो कांग्रेस ने तोड़े। तो ये अधिकार केंद्र के पास है। तो इस प्रकार पंजाब का विभाजन हुआ कांग्रेस के समय, हरियाणा बना, पंजाब बना, कांगड़ा मिलकर हिमाचल प्रदेश बना, ये कांग्रेस टाइम है। और संविधान की बात करते हैं और ये कहते हैं संशोधन क्यों लेकर आए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद और जस्टिस A.K. कृष्णा अय्यर के सुप्रीम कोर्ट में स्टे ने देने के पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान संशोधन करके अध्यादेश जारी करके अपनी मेंबरशिप कायम रखी। उतना बड़ा गलत काम हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं। वो पार्टी पार्लियामेंट की बात करे, वो पार्टी कानून की बात करे, वो पार्टी संविधान की बात करे, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई धोखा नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये कानून, ये अध्यादेश संविधान के अनुसार है, दिल्ली के जनता के हित में है और ये उसी प्रकार से समस्या का समाधान कर देगा जिस प्रकार से आर्टिकल 370 को समाप्त करके कश्मीर की समस्या का समाधान हुआ। अब किसी को भी कमेटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिल्ली की समस्या का भी परमानेंट समाधान हो जाएगा। ये इस बिल में है। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय घनश्याम जी। ऑनरेबल श्री वाइको जी, यू हैव 4 minutes, सर। Mr. Deputy Chairman, sir, I crave your indulgence for some generosity. We small parties always
face the same difficulty. So I kindly be liberal with 1 or 2 minutes. Honorable Chairman has been very generous. This debate is for 6 hours. You are getting 4 minutes. That's enough. That's why he is asking. Honorable, please. Honorable Vaikoji. With all the force under my command, I oppose this abominable, undemocratic bill which strikes at the very root of democracy, at the very root of federal spirit, at the very root of secularism, at the very root of social justice. Sir, the government of National Capital Territory of Delhi Bill 2023 has brought forth systemic shifts in the governance landscape of Delhi. While cloaked in the garb of administrative efficacy, the bill in many ways appears to erode the democratic fabric that is intrinsic to Indian polity. The bill notably clips the wings of the Delhi Legislative Assembly by stripping it of the power to legislate on services. This is a deviation from the norm, where a state legislature would typically have jurisdiction over subjects in the state list with exceptions. The establishment of the National Capital Civil Services Authority on the surface may seem like an earnest attempt to streamline administrative processes. However, delving into composition and powers exposes an unsettling reality. The Chief Minister, an elected representative, is rendered virtually, I should not use the word impotent, so he is rendered puppet within the authority. Now I recall what I read in history when I studied the college about the triumvirate in Rome, which was called a democracy. In Rome, when Julius Caesar but kept his sword, after his assassination, another triumvirate was formed, and Antony took the reins of the power. Here, directly opposite what is going to happen in India. The triumvirate, these two principal secretary and cabinet secretary, they are the majority, and the chief minister only a puppet. So this is the verdict given by the people of Delhi has been thrown into the dustbin of history. Many governors are appointed by the government, the central government. The governors in the opposite ruled states, how they behave, how... Please, I am coming to the end, sir. Sir, these governors, what they do in my state, Tamil Nadu, the governor has not given assent to the... Please speak on Delhi. He has not given assent to the bills sent by the State Assembly. For all I am telling, please. State Assembly. Please. So the Home Minister is sitting here. So he is the custodian of these governors. So these governors, what they do, You're very senior member. We are discussing this Delhi bill. Please. They do follow the philosophy of Hindutva and Sanatana Dharma. This is happening in my state, sir. Please. In my state. So the governors are behaving the agents of the central government. No, it will not go on record. Yes. Please follow rule number 0 and 240. No. Please speak on the bill. Speak on the bill. Of the central government. Speak on the bill. Your time is over. Your time is over, sir. You please finish. Conclude. Time is over. Finish. This bill should already be thrown out of history. Thrown please. out of the. Thrown out into the dustbin. Thank you, Honorable Vaikoji. Thank you. Thank you. Mani Hardeep Singh Puri ji. Mani Hardeep Singh Puri. Honorable Deputy Chairman, sir, one of the advantages of speaking so late into the discussion is that some of the most amazing statements bordering on the outlandish
have already been responded to by others, and some of the facts will, I'm sure, be covered in great detail when the Honorable Home Minister replies to this discussion. But I picked up some gems and I thought I will share them with you. It was when the Honorable Chairman was presiding that words that were used included retrogressive, unconstitutional, control freak, principles of federalism violated, arrogant government, accountability, constitutional सचिव के पद का इन्होंने प्रावधान किया है और इसके लिए मंत्रालय को मैं एक बार पुनः बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और एक बात और यहाँ पे आई है जिसको अध्ययन करते हुए मुझे लग रहा था कि ये बहुत ही अच्छी बात हुई है, और वो है कि जो लोग ऐसे व्यक्ति को भी इन्होंने ऐसे काम में डाल दिया जिसका पिछला रिकॉर्ड बेदाग नहीं है, वो दागदार व्यक्ति है, भ्रष्टाचार में लिप्त है और ऐसी जगह से सिर्फ अपने और अपने परिवार का वो करप्शन करने में लगा हुआ था। ऐसी सारी वस्तुओं को किसके द्वारा दिया गया? स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा दिया गया। बार बार उधर से सवाल एक उठता है, इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेज दो। स्टैंडिंग कमेटी में केवल भेजने से होगा या स्टैंडिंग कमेटी के जो भी निष्कर्ष निकल के आएंगे उनको मानने से होगा? पहली बार ये बिल स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा भेजे गए कई प्रस्ताव को पास भी करता है, उसको नियम भी बनाता है। ऐसे बिल का मैं समर्थन भी करता हूं और मंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूं, प्रधानमंत्री जी उसको इसके लिए बहुत शुभकामना करता हूं। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, मैं इस बिल के बारे में और कुछ बातें आपसे इस ग्रह के माध्यम से आपको बताऊं, इससे पहले मैं माननीय अध्यक्ष जी का इस विभाग के मंत्री के नाते धन्यवाद करना चाहता हूं कि बहुत ही समय की कटोकटी के बीच में भी इस बिल को खास समय देकर basic human rights violation, they were subjected to urine samples were tested, and they said, I know the honorable Congress member is encouraging show, but let me complete. You don't know where you will have to look then. Let me remind you. Sit down. You'll benefit from this. And Honorable Chairman, sir. One second. First ask your colleagues to take the seat. One second. First ask your colleagues to take seat. Yes. Now what is your point? The point is, because he is naming the person who is not a member of this house. How he can name that person? Yes. Let me tell the honorable member, Mr. Gupta, that this issue was addressed by me on a point of order raised by the leader of opposition, and I had categorically held that this house has the power to discuss conduct of anyone. This house has the power to discuss anything under the planet, and as a matter of fact, this issue was signaled by former Chief Justice Mr. Gogoi also. If it is with respect to member of a Lok Sabha, then there is a set procedure that before making accusations, notice has to be given. So don't get upset. Don't get upset. Mr. Chairman, sir. One second. Let me tell you, Mr. Gupta, if you get upset, you will be helping Mr. Puri. You will be helping Mr. Puri if you get upset. Please. Sir, आराम से बोलेंगे, इनका टाइम नहीं जाता इसमें। Sir, this unfortunate incident, which we would all want to forget, but which my friends, those who are opposing this bill, perhaps want to forget even more, took place on the fateful night of 15th and 16th January 2014. Sir, I wrote about it even then. I have a publication which has these and other such incidents documented. And these were, I can give them the citation, these were much
before the BJP government under the leadership of the Honorable Prime Minister assumed responsibility. Sir, this did not end here, because the then so-called accountable Chief Minister, who did not succeed in persuading or using the margin of persuasion with the Delhi police force, then decided 3 days later to hold the entire city to ransom by going on a strike at Rail Bhavan for 36 hours. It was, sir, on the 20th of January 2014. And all he wanted was, those 3 police persons who did not support that vigilante type of action against those foreign ladies, they should be suspended. And sir, because we had a government in power in Delhi at that point of time, they followed the policy of appeasement. They indulged this kind of behavior, and 2 of the policemen were transferred because they were afraid that the 26th January celebrations would be thwarted. Sir, these are the facts, and let me not stop here. This was an action in January 2014. Now this bill speaks to the heart of governance. Heart of governance. What does governance say? इसमें आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है. Sir, what does the heart of governance say? And I'm very happy that परमिशन की जरूरत नहीं भैया. my chance to speak came after my learned friend Shri Mahesh Jetmalani and others. But since I'm not a lawyer and I was preparing for this intervention, for which I'm deeply grateful to my party, there are 2 or 3 things which stand out. This particular insertion in 1991 and 239, what does it seek to do? It acknowledges the sui generis character of Delhi. The honorable member mentioned there was a reality. It is a union territory, yet it has a legislature, elected government. So he used the term escalated union territory. But that sui generis character needs to be acknowledged, it needs to be fleshed out, and that is precisely what the bill that the government has brought is seeking to do. Now, the civil service authority which is being established, I found it appalling that someone can get up here and say one member is supreme. Yes, he's an elected chief minister. He deserves full respect. He deserves to have his position as primus inter pares in this 3-member committee acknowledged and respected. But to say that the other 2 are against the whole system, or they have been appointed and their integrity is in doubt, is an outlandish statement, if I may submit. Let me now read out to you how they treat their chief secretaries. Sir, I have in front of me the copy of an FIR filed a few months later. It was filed on 20th February 2018. The then chief secretary says that he received an information yesterday, that is 19th February. I was informed on telephone at 8:45 p.m. in the evening that the advisor to the Chief Minister, Shri V.K. Jain, I had to reach the CM's residence at 12 o'clock at night. Sir, I'm not going to read out the whole FIR, but I'll read out some salient portion. He had already met the Honorable Chief Minister at that point of time, earlier in the day. He was to meet the Chief Minister again the next day because there was a cabinet meeting. And the contents of this FIR, sir, are amazing. He says he was told that if some advertisements that were the Honorable Chief Minister desired and some of their MLAs desired, if those advertisements are not released, he better come there at 12 o'clock. The Chief Secretary reached the Honorable Chief Minister's residence. He thought only the Deputy CM would be there, Shri Manish Sisodia. But to his surprise, 11 other MLAs were there. And they sat down and started questioning the Chief Secretary in an aggressive manner why those advertisements were not released.
To which the Chief Secretary replies as part of the FIR, part of the subsequent legal records, that those advertisements could not be released in the light of the Supreme Court directives. Then what happened is even more amazing. The Chief Minister and the Deputy Chief Minister are present, and the Chief Secretary is physically assaulted. I am not surprised. I am not surprised. Honorable member, इसका जवाब आप जनता के सामने देना। आप भूलना चाहते हैं इसको, हम आपको याद करवाएंगे। One second. Honorable Minister, a copy of this FIR be laid on the table of the House. Here and now. Okay. Now I want to come to the subsequent stages of what happens. Sir, initially when the case came up in the preliminary legal stages, the government of the National Capital Territory of Delhi took the view that no such incident took place. Total denial. When it went up to the next stage, they said, हाँ इंसिडेंट तो हुआ था, पर इसमें चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने हाथापाई नहीं की, उनके एमएलएज ने की हैं। साहब आप मुख्यमंत्री हैं, आपके घर में आप एमएलएज को बुलाते हैं, उनको कहते हैं चीफ सेक्रेटरी की पिटाई कर दो, तो ये कोई मैकेनिज्म नहीं चलेगा। ये इनको जनता के सामने जवाब देना पड़ेगा। और ये सब लीगल। Now let me come to a few substantive things, sir. I have had the privilege, of being Minister for Housing and Urban Affairs. Now, Nothing will go on record. Nothing. Sir, I have had the privilege of being the Minister for Housing and Urban Affairs. I have heard from this side also, from every side of the House. One second, Mr. Gupta, you'll have to lend some ear to me and be little patient. There have been inputs that have been absolutely beyond the bill. When I tried to request the honorable members to be in the groove, they said no. And I have had a number of them saying so. If the honorable minister is making an input, hear him patiently. When there is an occasion for someone from this side, you will have an occasion. But can we create ruckus in the house like this? So no, I will not lend it. क्या कहा? ये झूठी एफआईआर दिल्ली कोर्ट से खत्म हो गई। Sir, let me shift now to a second segment of my submission to this august House through you, sir. I've had the privilege of being the Minister for Housing and Urban Affairs at least now nearly 6 years, sir, from 3rd September 2017. Sir, on many such occasions, I have had to appeal to the Honorable Chief Minister for the implementation of central schemes. When it came to the unauthorized colonies and their regularization, I had to write a letter to him. I'm placing that on the table of the House also, about the false narratives that they were creating. But let me come to some basic issues, sir. When it comes to schemes which have the Capital Territory of Delhi as an equal participant, let me give you, sir, something like the Delhi metro system. Sir, they are still sitting. There have been constant delays in getting approvals for metro and RRTS projects. The signing of the tripartite MOU for DMRC Phase 3 and Phase 4 for 3 priority corridors is pending despite several reminders to the GNCTD. Recently, sir, they are co-partners with us for the RRTS and they would refuse to part with the remaining 415 crores. The matter was agitated before the Honorable Supreme Court and the Supreme Court asked them, how much money have you spent on advertisement? Sir, the reply given to the Supreme Court by the Capital Territory of Delhi government was that they have spent 1,100 crores on advertisements in the last 3 years. In 3 years. And they could not release 415 crores for the RRTS. So this again, एक ऐसा मुद्दा है जिसपे इनको
दिल्ली की जनता को जवाब देना होगा। और सर, लेट मी गिव यू वन और टू अदर some examples, sir. A reference is already made in terms of dealing with institutional mechanisms. Let me also tell you, sir, that the 400 or so specialists or consultants who were hired, well, I'm very happy that the Lieutenant Governor has finally terminated their services. What services they provided at exorbitant salaries, perhaps they might like to inform the House about that. But there was another expenditure, sir, where they incurred 60 लाख का खर्चा किया कुछ इक्विपमेंट खरीदने के लिए। इक्विपमेंट 60 लाख की है और उन्होंने विज्ञापन उस पर किया 23 करोड़। I will place those facts in front on the table of the House also. हर नियुक्ति, हर स्थानांतरण, हर चीज के बारे में ग्रेड ए अफसर से लेके दानिश अफसर तक व्यापक है, विशाल है। कौन किसी और की सरकार में वित्त का सेक्रेटरी बनेगा, कौन पीडब्ल्यूडी का सेक्रेटरी बनेगा, उनके बीच में अदला बदली कब और कैसे होगी, ये माननीय एलजी करेंगे निर्णय, न कि चुनावित सरकार। ये बड़े स्पष्ट प्रावधान है, मैं अभी आपको प्रावधान के नंबर नहीं दे रहा हूं। दूसरा, जितने भी सतर्कता के अधिकार क्षेत्र हैं और जितने भी नॉन सतर्कता, नॉन विजिलेंस, वो सभी केसेस अनुशासनहीनता के विषय में सब इस अथॉरिटी में आएंगे सुझाव के लिए और माननीय एलजी के पास निर्णय के लिए। इसका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। उद्देश्य है एक भय और हिस्टेरिया का माहौल बनाना, एक खौफ पैदा करना, जिससे कि आप इन सभी सचिवों को कंट्रोल कर सके, जो कि दिख रहा है दिन प्रतिदिन। तीसरा, ये अथॉरिटी में 3 व्यक्ति हैं, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री को बहुत बड़ा ओहदा दिया है, अध्यक्ष बनाया गया है। ये अजीब सा अध्यक्ष है दोस्तों, कोरम है 2 लोगों का, ये एक चेयरमैन है बिना चेयर के। मैंने वैश्विक और भौगोलिक रूप से आज तक कहीं नहीं देखा मेरे सीमित अनुभव में कि एक चुनावित चीफ एग्जीक्यूटिव 2 सचिवों के नीचे आएगा। ये 2 सचिव बैठ के निर्णय करेंगे, ये 2 सचिव बैठ के निर्णय करेंगे और वो मुख्यमंत्री वहां खड़ा होगा, देखता रहेगा, चुप्पी साधेगा या अपना डिसेंट नोट करवाएगा। और उसके बाद, और ये सब प्रावधान है, एक एक चीज में जो बोल रहा हूं प्रावधान है, उसके बाद ये निर्णय और सुझाव जाएगा पहले सुपर सीएम के पास और उसके बाद सुपर बॉस जो हमारे सामने बैठे हैं माननीय गृह मंत्री, ये सब गृह मंत्रालय में आएगा। चौथा दोस्तों, बाद में चौथा, जितने बोर्ड्स हैं, समितियां हैं, संस्थाएं हैं, वो सब, और इसे बहुत हैं, महत्वपूर्ण हैं, अल्पसंख्यक संघ, दिल्ली सूरेज बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड, सो मेनी, लेबर वेलफेयर बोर्ड, वक्फ बोर्ड, ऐसे 20 की सूची हमने दी है न्यायालय में। उन सब की बजट बनाएगा ये एनसीटी सरकार। उनके काम होंगे एनसीटी के लिए, एनसीटी के लोगों के लिए, लेकिन उनके अध्यक्ष, उनके हेड को वहीं से अपॉइंट होंगे, सुपर सीएम या गृह मंत्रालय से। 5वां, जो दूरगामी नीतियां हैं सभी सिविल सर्विस के लिए, उनके टेन्योर के लिए, उनके स्थानांतरण के लिए, उनकी नियुक्तियों के लिए, कौन सी पोस्ट नाजुक है, कौन सी पोस्ट सेंसिटिव नहीं है, और उपयुक्तता, वर्ड इस्तेमाल किया सूटेबिलिटी, उपयुक्तता इस अफसर की इस पद के लिए, ये सब, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन होना चाहिए, ये सब माननीय सुपर सीएम, और अंततोगत हम जानते हैं कि जो सब चीज करती है नियंत्रण, वो होम मंत्रालय। हर छोटी चीज के लिए, हर बड़ी चीज के लिए पूर्ण रूपेण व्यापक निर्बाध टेक ओवर, कब्जा, निर्बाध कब्जा है। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, आप जैसे उच्चतम पद पर विराजमान महानुभाव, क्या आप अफसर क्लासेस के लिए निचले से लेके सेक्रेटरी तक नीतियां आप बनाना चाहते हैं? कम से कम वो तो एक छोटे ओहदे वाले मुख्यमंत्री के पास छोड़ दीजिए।
ब्यूरोक्रेसी पे नियंत्रण की बात आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा की जाती है, तो ये लोग तो अपनी एक पैरेलल ब्यूरोक्रेसी भी बना चुके हैं। क्योंकि अनेक प्रकार के समाचार पत्रों में आया है कि कई ऐसे लोग जो कि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो सरकारी पदों पर भी विद्यमान हैं और सरकारी पदों पर रहते हुए सरकारी शक्तियों का भी उपयोग कर रहे हैं। वैसे ये लोग बहुत दावा करते हैं कि इन्होंने बहुत सारी चीजें फ्री दिया, कुछ 100 रुपए दिल्ली की जनता को कुछ मामलों में फ्री मिला और अपने लोगों को कई मौकों पे, कई जगहों पे दर्जनों से ऐसे लोग हैं जिनको लाख लाख 1.5 लाख की तनख्वाहें मिली। और यदि आरोपों को देखा जाए तो करोड़ों रुपए के घोटालों के आरोप हैं। एक कहावत होती है, माले मुफ्त दिले बेरहम। तो मैं कहना चाहूंगा इनकी तो स्थिति यह है कि माले मुफ्त दिले बेरहम, दिल्ली पे सितम और करोड़ों हजम। गुजरात में कांग्रेस का वोट हाफ कर दिया, पंजाब में इनका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में साफ कर दिया और आपने इनको माफ कर दिया। और उसके माफी के बाद भी मुझे लगता है अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा था, तो मैं भी ये कहना चाहता हूं, आप साथ में आए हैं दिल्ली के इस बिल पे, दिल्ली की जनता के लिए आए हैं या किसी और कारण से आए हैं, ये दिल्ली की समझदार जनता समझती है। तो मैं भी एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि जमीर भी मर जाते हैं। You have been a former law minister. Sir, whenever there is a bench of judges, Sir, you are the wisest judge is one who says, I agree. Sir, time is please. Sir, you are a legal luminary. I am ordinary law minister at that time. Please allow me to speak. 4 minutes. Sir, on behalf of ADMK party, I support the bill brought by Honorable Home Minister Amit Shah ji regarding to seek that to promote harmonious relations between the legislature and executive and further define the responsibility of the elected government and the lieutenant governor in line with the constitutional scheme of governance of the national capital territory of Delhi. Sir, you know very well the Article 1 of the Constitution of India defines the territory of India as comprising of states and union territories and nothing else. Read with Article 239 provides that the union territories to be governed solely by the President. Sir, I want to make certain points because our eminent lawyers Abhishek V and Chidambaram, they argued about the bill against that. They are the eminent lawyers. If they come this side also, they will defend the bill also. They have the capacity. Therefore, as lawyers, they made their points. That is different, sir. But the crux of the point what they said regarding the federalism and the rights of the union territory, state governments and union territories, everything they argue. I want to know what is the present status of federalism? Who is responsible for decentralization of this government? This is your government, Congress government. The Congress government, they are responsible for this kind of anarchy and take away the state rights. That is, everybody knows that. Especially 1976 emergency period, nobody can forget the Indian history. How this former Prime Minister Srimati Indira Gandhi ji, how she brought certain rules and taken the state powers including education. Same. Who did it? But whether central government did anything for that? But if they thought they would have brought, even a DMK was afterwards, coincided with the government so many times ruled, if they were told, they have brought once again education to the state subject. But they have not done. Because why I am telling, the federalism, everything is gone arguing. When they are opposition, they are arguing for federalism. When they are coming to the power, they want to decentralize, hold the power. These are the things are happening. And centralize, they are centralizing. This is the power, sir. For example, sir, just now I started, 1 minute. sir. 1 minute. For example, even finance, sir, who brought the GST thing? Because our DMK government is criticizing GST. We are also against that. Who brought that? But Chidambaram only financially brought that. See, all like that, there are so many times, sir.
And also, because you are going ringing bell, I want to crux up the point. I don't want much of the time. Because I am supporting Amit Shah, what he has brought. See, that because what they said, why the special status only for Delhi? We are demanding for Pondicherry has to given the statehood. Whether they have given, whether Congress has given, they are not given. But because of the peculiar situation and based on the Supreme Court judgment, now the Honorable Minister has brought it to see that protect the interest of the GK. Just I am finishing, sir. 4 minutes. Sir, I am finishing. I am finishing, sir. Because the Parliament, they are telling who are the people. This Parliament is Parliament is responsible. The elected people. We are enacting the bill. We are responsible. Even the governor is taking any decision. GK Home Minister. Shri GK Vasan. Thank you. Shri GK Vasan. 4 minutes. 4 minutes. Sir, I stand here to support this important bill, sir. Sir, I want to echo the views of common public in Delhi, sir. Delhi being the capital city of India, sir. Delhi public feel this is a symbol of India, sir. The bill, sir, they feel it is necessary to balance the welfare of the people in Delhi, sir. This act is required to balance both local and national interest in the capital city with democratic will, sir. More than that, sir, the status of NCTD cannot be equated with other union territories with legislature, sir. Therefore, the people feel center has a much bigger stake over legislature in administration and enforcing law and order in the NCTD, sir. Sir, most important, sir, this bill is also inconsistent with Article 239AB of the Constitution, which empowers the President to make regulations for the peace, development and good governance of the Delhi, sir. Sir, this bill, sir, will also be essential for public order in Delhi, security in Delhi, administrative improvement in Delhi. To conclude, sir, I would like to say narrow political opportunism cannot take precedence over good governance and national security at large, sir. Therefore, my party strongly supports this bill. Thank you, sir. Shri Bhuvaneshwar Kalita, not present. Shri Javed Ali Khan, 4 minutes. Yes, sir. माननीय सभापति जी, मैं दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 के विरोध में खड़ा हुआ हूं। आज का दिन हमारे लिए बहुत मधुर रहा। बहुत सारे वकीलों की बात भी सुनी और जज साहब की बात भी सुनी, सीनियर लोगों की बात भी सुनी और कुछ जो हमारे बाद सदन में आए थे उनकी बातें भी सुनी। एक बात बड़ी प्रमुखता के साथ उस तरफ के साथियों ने उठाई, मुख्य सचिव की पिटाई का मामला। एफआईआर हुई, आपने टेबल करने के लिए कह दिया। मैंने ये निवेदन किया था अपनी जगह से बोलते हुए, शायद आपने सुना नहीं, कि उस केस का हश्र क्या हुआ वो फैसला भी कोर्ट का टेबल कर दिया जाए, क्योंकि उसमें किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। वो मनगढ़ंत केस रखा गया था, झूठा साबित हुआ कोर्ट के अंदर। पुरी साहब कहते हैं कि कन्वीनियंस के हिसाब से बोल लेते हैं लोग, आधी बात छोड़ देते हैं, आधी बात कह देते हैं, जो मतलब की होती है वो कह देते हैं। उन्होंने भी ठीक यही किया है कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आधी बात प्रस्तुत कर दी और जो उस कोर्ट केस का हश्र हुआ था उसके बारे में उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। I direct you to place that judgment on the table of the house. Okay, we will do, sir. Go ahead. पर अपील हुई है वो भी रखवाई, जजमेंट फाइनल नहीं हुआ है, अपील हुई है हाई कोर्ट में। And honorable members, I had indicated on number of occasions, this house, बढ़ा दीजिएगा। no, this house
cannot be a platform to set afloat narratives which are not factually tenable. सर मैंने तो You have made an assertion in the House. मैंने अभी तक and कोई you have गलत not बात given a complete picture. कोई नियम I विरुद्ध direct you to put it on the table of the House. मैंने कोई गलत बात कोई नियम विरुद्ध बात तो कही नहीं है सर। हम तो आपका रोज ही सुनते हैं जो आप हमें बताते हैं, हम मानते भी हैं। One second. We have to do our due diligence. सर सारी we have बहस to do सुनने our के बाद homework and then come to the House. Go ahead. सर सारी बहस सुनने के बाद और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बातें कही गई, मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये उम्मीद छोड़ चुके हैं कि ये दिल्ली में कभी वापस सरकार बना पाएंगे, इसलिए दिल्ली पर हुकूमत करना चाहते हैं जिस तरीके से भी हो। ये चीफ सेक्रेटरी की बात करते हैं सर। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं नाम नहीं ले रहा हूं, गृह मंत्री जी अगर चाहें तो मैं नाम भी ले दूंगा। एक सांसद ऐसा है जो हर हफ्ते तो नहीं, हर महीने एक ना एक अधिकारी को पीटता है। ना उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ कर पाती है, ना गृह मंत्री जी उसके खिलाफ कुछ कर पाते हैं, और चीफ सेक्रेटरी जिसका केस भी कोर्ट ने खत्म कर दिया, उसके लिए हाय तौबा मचाए हुए हैं। Honorable member, you have made a serious assertion. Yes, sir. Entire documentation. Yes. Which is legitimately in public domain be placed on the table of the House. I have many press cutting of an MP. Place it on the table of the House. I will. During course of the day. Sir. During course of the day. Please, Professor, sit down. Sir. Professor. Sir. We cannot allow free fall of information. Sir, एक बात भी ऐसी नहीं कहूंगा। This is not a platform or ground for accusation. Sir. Mr. Gupta. Sir, एक बात भी ऐसी नहीं कहूंगा जिसका Mr. Gupta. सर एक बात भी ऐसी नहीं कहूंगा जिसका So I take it. Yes, that's all I said. I don't know why other members are agitated. Dr. Keshav, I am surprised why the members are agitated. The honorable member is prepared to lay it on the table. Yes. I said during course of the day. Take your seat. All of you take your seat. सर इस बिल के पास होने के बाद मुझे ऐसा लगता है, अब इसका डॉक्यूमेंटेशन मत मांगिएगा सर, वो मैं ले नहीं पाऊंगा। I will, if that is required. Think twice. It has serious consequences. ओके सर। सर लिसन भाई, इस बिल के पास होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि उपराज्यपाल का पद भारत के किसी भी राज्य के राज्यपाल के पद से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। अब इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है नहीं सर, है क्या? इसमें नहीं है। इसमें नहीं है। और मुख्यमंत्री की हालत दिल्ली के एक नगर पंचायत के चेयरमैन से, टाउन एरिया के चेयरमैन से भी गई गुजरी हो जाएगी। लिहाजा मैं बीजेपी के साथियों को और सरकार को ये सजेस्ट करना चाहता हूं कि आप इधर उधर की बात मत करिए। अगर आप सही सोचते हैं कि दिल्ली में बहुत गलत शासन चल रहा है, तो दिल्ली की विधानसभा को खत्म करके यहां इसको नगर पालिका या महानगर पालिका जो बनाना चाहे बना दीजिए। मेरा कुछ टाइम खराब हो गया था सर बीच में बातचीत से। Accommodate कर लिया है। Accommodate कर दीजिए। That time has been accommodated. No, it has to be accommodated. It started late. श्री भुवनेश्वर कालिटा। सर मेरी बात। श्री Thank you. Thank you, Honorable Chairman, for giving me this opportunity to speak on this very, very important bill on the government, on this amendment bill. Sir, some of the questions, the opposition members has raised few questions on the unconstitutionality and morality and the undemocratic nature of the bill. So that all has been tackled and handled by our jurists like Mahesh Malini, Justice Gogoi has very well explained the constitutionality of this bill, and I think our friends in the other side will be satisfied with that. So I will not go much into that. I only
want to explain certain things which has come from the opposition members, and some of the members have, and most of the members are comparing with their state, like Tamil Nadu, like West Bengal or Bihar. They are talking about a state, but here in this bill we are not talking about a state, because Delhi is not a state in the true sense. It is national capital territory, and it falls under special provisions mentioned in Article 239 to Article 242 of the Constitution. The Article 239A 3B grants Parliament the authority to legislate for Delhi and its related matters. Delhi's government functions according to the procedures outlined in the Constitution. It is a unique administrative unit with specific legal provisions governing in governance. So it is a completely different case. It's not like any other state that they are comparing and they are making their statements. So the question that was raised by was about Supreme Court, that this is pending in the Supreme Court. So the matter which is pending in the Supreme Court is different. The issue is different, and this is a different issue. The Supreme Court explained that the Union government wants control over certain services. A new law is needed. That is what the Supreme Court says. This new bill is being passed to make that happen. The entity with the authority to create laws and rules is the same one that can make rules under the Act. In this case, it's the Union government. So here I want to point out certain things which has been raised by our friends in the opposition in the other side. So they say that the bill is undemocratic. So the bill is not undemocratic. Had it been undemocratic, it would not have come in the parliament at all. So, and what kind of democracy they are talking about? The democracy, the legislature which is functioning in Delhi, the Legislative Assembly of the NCT of Delhi is unique as it does not experience prorogation. In 2020, there was just one session. So, just one session in 1 year, comprising 5 brief sittings over 2 days, solely for budget purposes, for the passage of the budget. Similarly, sir, in 2021, 2022, 2023, only one session took place, all centered around passing the budget for the respective fiscal years. So they talk about democracy where the legislature doesn't sit. It sits only once in a year to pass the budget. So another thing that it is in the knowledge of them, and we ask all that the infrequent convening of cabinet meetings. You see, in a democratic government, cabinet is supreme and cabinet has to be taken into confidence. But here, the cabinet, both in 22 and 2023, primarily cabinet was summoned to address budgetary concerns. This approach of the government is seen as problematic, as it may impede effective administration and decision on implementation. Notably, the absence of crucial actions such as presenting Comptroller and Auditor General report, which is a constitutional obligation, for the past 2 years misses the questions about the transparency and accountability. So, when the cabinet doesn't sit, when the assembly doesn't sit, where CAG report cannot be placed, where is the transparency and accountability? So, as you all see that in this, in the authority, one of our members said that CM's position has been made redundant. Sir,
What for? That redundancy is what I want to explain here, sir. The backlog of crucial files pertaining to prominent institutions like Regional Rapid Transit System, AIMS, the IIT Delhi, indicates a lack of expeditious decision making within the government of NCT Delhi. These delays have raised concerns about the pace of development and implementation of essential projects. So they are not interested about these projects, which are for the people, which are for the benefit of the people. But they are not interested in this. Our Honorable Minister for Housing has eloquently explained about that, so I need not repeat that anymore. Sir, today's world is going ahead towards the modernization. But here we see, while a 5G technology initiative was accepted by numerous states, including our many states, including those ruled by different parties, the NCT of Delhi has refrained from endorsing it, citing its perceived lack of relevance in the city's development. So, sir, they are not interested in public work. They are not interested in work of the digital world. They do not want 5G. So, what they want to say? What they want? They want only power. The bill for them is power. Because that the Chief Minister power has been clipped. So that is their objection. That is their complaint. Sir, this bill is not of power. This bill highlights the plight of the people and to make the life easy for the Delhiites and the capital. Sir, we all live in this capital. We all MPs will live in this capital, and we all see what kind of. The other day, one member has said that there was water shortage. Why? The water shortage was because of flooding. So, 9 years of this government, the flood problem has not been solved. Sir, we remember, if we all remember, during the COVID pandemic days, there was shortage of oxygen. Why? 8 plants were granted to Delhi government. 8 oxygen plants were allotted to government of Delhi, but they did not put up those plants. 1 or 2 they have put up, others were not put up, and that's why there was oxygen shortage. But for that also, they blame the government of India, the central government. So, sir, I want to support this bill with all my support. And this is a very important bill, and this bill should be passed unanimously. That is my appeal. Thank you, sir. Shri Santosh Kumar P, 4 minutes. Thank you, Chairman, sir. I take this opportunity to oppose this undemocratic, anti-federal, unconstitutional bill introduced by the Manipur Shame Union government. Sir, if you go through the pages of history, one thing can be easily understood. That one organization, I don't want to name it, based on Nagpur, was from the very beginning itself opposing the concept of federalism. They thought the concept of federalism is actually anti-Indian, so they always stood against that concept. And I think my party, the Communist Party of India, thinks that this attack in the form of this bill is a new addition to that continuing attack on federalism. And I would like to ask the Honorable Home Minister, who is present in this august house, the statement, objects and statements, a detailed list is given. It is stated that any decision taken or any event happening in the capital of the nation not only affects the residents, and many things are stated, and national reputation, image, credibility and prestige at stake in the international global spectrum.
So I would like to ask you, Mr. Home Minister, can you cite even a single incident, single example to justify your position? You are insulting the people of Delhi. Yes. The democratically elected government, is the democratically elected government of Delhi is responsible? In any of the international forums, anyone discussed about these issues? Unfortunately, so as to say, the international community is discussing about Manipur. I am sorry to say, the treasury benches were vocal against the failure of the Delhi government. May I ask you, it was the European Union Parliament which discussed about one particular Indian state. I don't want to name that because that will create problems here. They don't want to hear the name. More than 6,500 cases were registered, FIR. Not even 500 were arrested. So, in one state, your government have failed like anything, and now you are blaming the union territory and its government, Delhi government. So it is so shameful from your side. And let me ask you one more thing. There are many provisions which is unconstitutional, anti-federal in this. Because of the shortage of time, I don't want to mention more. Let me ask you one important question. Most of you people may be indebted to the BJP recently because of many factors. But at least you should learn the history of BJP political party. As a political party, BJP once upon a time stood for the Delhi statehood. Full statehood. Advani, L.K. Advani, the forgotten hero of your party, in 203, drafted a bill suggesting the full statehood of Delhi. And what is your position now? Why you are forgetting all these things? And this thing, this Delhi bill actually makes the chief minister's position fourth. First, the lieutenant governor. Secondly, the secretary. Third, another officer, and the fourth one is chief minister. And what a shame is that. So why we need a democratically elected government in Delhi? Amit Shah could have brought with a new bill suggesting the abrogation of the Delhi administration. Don't give them ideas. This was the best thing. This was the best thing. So this is an insult to the democracy. And let me tell you, sir. Conclude, please conclude. Yes, I am going to conclude. Some of our friends, especially from Orissa and Andhra Pradesh, were very vocal today. ED might have knocked more on the door today, but we are not fearful of the ED. We oppose this bill. This is anti-India, anti-democratic. So we appeal all of you to oppose this bill. Dr. Anil Jain. धन्यवाद सभापति महोदय। 10 minutes. महोदय, मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, मेरा स्पष्ट मानना है कि यह विधेयक न केवल दिल्ली बल्कि देश के नागरिकों की भावनाओं को ध्यान में रखकर लाया गया है। यह विधेयक दिल्ली की विशेष ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्थिति को देखकर लाया गया। महोदय, मैं इस बिल की संवैधानिकता और वैधता के बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के बारे में बहुत बात हुई है। मैं उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट की आदेश की पैरा 86, पैरा 95, पैरा 164C, इसके तहत इसमें साफ कहा गया है कि संसद को अनुच्छेद 239A के तहत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। और इसकी बात मुझे लगता है कि अब इसमें कोई विवाद नहीं रहा है। उस पक्ष के लोग भी और इस पक्ष के लोग भी इसके बारे में अब विवाद से दूर हैं। तो ये एक बात तो तय होती है कि संवैधानिकता से परिपूर्ण है और ये अधिकार क्षेत्र में आता है मान्यवर। लेकिन प्रश्न ये है कि ये अध्यादेश लाने की जरूरत क्यों पड़ी। एक माननीय सदस्य ने बोला था कि अध्यादेश कब लाए जाते हैं, कि विषमता हो या आपात स्थिति हो। ये सही मायने में विषमता ही पैदा कर रहे थे। इस दिल्ली में ये विषमता पैदा कर रहे थे, इसलिए अध्यादेश लाना पड़ा मान्यवर। जब 11 मई को 2023 को सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, हालांकि उस आदेश में 2 जज की खंडपीठ के लिए निर्णय देने के लिए कहा गया था। उस आदेश में इन प्रिंसिपल निर्णय हुआ था, लेकिन इन आम आदमी पार्टी के लोगों ने इसको तुरंत उसी शाम को इम्प्लीमेंटेशन करने का प्रारंभ कर दिया, जबकि
दो जजों की खंडपीठ को इसको निर्णय देना था, उसकी डेट नहीं लगी, मैटर नहीं लगा, निर्णय नहीं आया, लेकिन इन्होंने इंप्लीमेंटेशन प्रारंभ कर दिया और सतर्कता विभाग की फाइलों को ढूंढना शुरू कर दिया। सतर्कता विभाग के सचिव को, विशेष सचिव को बुलाकर निर्देश देने प्रारंभ कर दिए। सोशल मीडिया में जारी कर दिया कि आशीष माधव राव जो सतर्कता सचिव है उनका ट्रांसफर हो गया। मान्यवर 11/5/2023 के 11 मई के निर्णय में पैरा 165 में न्यायालय की नियमित बेंच को इस मामले का निपटारा करने का आदेश दिया गया था, जो बैठी ही नहीं है, लेकिन इन्होंने इंप्लीमेंटेशन प्रारंभ कर दिया। कारण क्या था? क्योंकि और इंप्लीमेंटेशन में भी क्या किया इन्होंने सतर्कता विभाग के निदेशकों को आदेश दिया कि सतर्कता विभाग के सचिव और स्पेशल सचिव इनको रिपोर्ट मत करिए, इनकी बात मत सुनिए, क्योंकि ये फाइलें अपने कब्जे में करना चाहते थे। मान्यवर ये फाइलें क्या थी, क्यों चाहते थे ये? मान्यवर ये मनीष सिसोदिया जो जेल में है, इनके उप मुख्यमंत्री, इनके शराब घोटाले की फाइल विजिलेंस के पास थी, ये उस फाइल को कब्जे में करना चाहते थे, ये सबूत बिगाड़ने चाहते थे। मान्यवर अरविंद केजरीवाल जी जो इस देश दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने जिस प्रकार से असंवैधानिक तरीके से दिल्ली की जनता का पैसा लूटकर जो सादगी के प्रतिमूर्ति बनते थे, जो आंदोलन की उपज से पैदा हुए थे, ऐसे केजरीवाल जी ने अपने बंगले पर 53 करोड़ रुपए खर्च किए और उसकी फाइल उसमें है। इसलिए ये सतर्कता विभाग को कब्जे में लाना चाहते हैं। दिल्ली जल बोर्ड के 70,000 करोड़ के घोटाले की फाइल उसमें है, इसलिए ये विजिलेंस को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। 90 करोड़ रुपए जो आम आदमी पार्टी को दिल्ली सरकार ने जो उसके विज्ञापन में खर्च किए, उसकी फाइल विजिलेंस पे है, इसलिए लेना चाहते थे। 433 जो गलत नियुक्तियां की बगैर स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के, बगैर यूपीएससी के, बगैर स्टेट सर्विस कमीशन के, इन्होंने 437 लोगों की नियुक्तियां की। और किन लोगों की नियुक्तियां की? ये उन लोगों की नियुक्तियां की जो इनके नाते रिश्तेदार हैं, इनके विधायकों के नाते रिश्तेदार हैं। योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर कौन? योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर. Point of order is, sir, 238. The speaker. My point of order is 238. The speaker continuously he made the derogatory statement and used some names. He mentioned some names, sub judice, and his speech also sub judice. Yes, Mr. Pathak. Sir, there are two specific points of order. One second, Mr. Pathak, raise your point. What are you saying? Sir, I just have one small point to submit. No, not point. What is point of order? I have a point of order. Then why Mr. Pathak is standing? The point of order is at 238 and 238 continuously, sir. Mr. Pathak, are you raising a point of order? Yes. Yes or no? 238, sir. The point you are of order. raising a point of order. Yes. Please do that. 238. Mr. Raghavchara, take your seat. I also have a separate point of order. Doesn't matter. Sir, this 238 says a member while speaking shall not refer to any matter of a fact on which a judicial decision is pending. He has been continuously alleging, sir, the matter which is sub judice. He has been also naming a leader. So make a personal charge against the member. Mr. Jain, Mr. Jain, Mr. Jain, take your seat. One second. Only Mr. Pathak. Right, sir. One second, please. Let Mr. Pathak raise a point of order. Mr. Pathak, what is your point of order? My point of order is this, sir. It is 238. I am reading it out. Yes. A member while speaking shall not refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending, number one. Number two, make a personal charge against a member.
reflect upon the conduct of a person in high authority unless the discussion is based on a substantive motion drawn in proper items. Sir, the said member has been using name of a leader and the matter is sub judice. For the same thing, you have called the name of another leader. So I would request. Mr. Pathak, can you give details of a judgment which is pending? Details of money, Mr. Manish Sisodia's name. Can you give some details? Can you give some details? What is that? You must raise a point of order. Yes. I'll explain, sir. Please let me know, sir. Mr. Gupta. One second. One second. Please. Take your seat. The kind of gesturing in which some members have engaged cannot be overlooked. I would urge the honorable members to maintain decorum. I am prepared to give floor to every member concerned. There is a point of order from Mr. Pathak, but he has failed to give his judgment. 1 second. Let Mr. Pathak continue. Mr. Pathak, 1 second. Bear out your assertion. Sir, I'm just... You have read 238. Right, sir. I have noted it. Right. Can you give the fact foundation of it? Fact foundation, sir. Member Manish Sisodiya जी के against जो मैटर सब जुडिस है, उनका नाम बार-बार लेके एलिगेशन लगा रहे हैं. I fail to understand, Mr. Pathak, what is your point of order? I will table it, sir. I will table it. Sir, I have a separate point of order. I will table it, sir. I know you will have Mr. Raghav Chadha, and you may have a better point of order. But first, allow that member to, in his own right, to make out a point of order. I will, sir. I have raised the point of order under Rule 238, and I will table it. Okay, noted. Dr. John Bitas. Sir, rule. Your point of order. Sir, please. Rule 240. 240. 240. I am reading, sir. The chairman, after having called the attention of the council to the conduct of a member who persists in irrelevance. Yes. He is persisting in irrelevance. Or tedious repetition. Sir, or tedious repetition either of his own arguments, repeating again, or of the arguments used by other members, Trivedi arguments. I get your point. Dr. John Bitas, to discontinue his speech. Dr. John Bitas, sir, you are thinking for a moment that you are the chairman. Your misfortune is, I am the chairman. I have never called out such attention. Take your seat. Mr. Raghav Chadha. Allow Mr. Raghav Chadha. I have 2 points of order. No. Only Mr. Raghav Chadha. And the last one. I have two separate points of order. You first raise one. Let him complete, sir. I heard him. He has no point of order. We can't allow time to be so utilized. Please, Mr. Raghav Chadha, go ahead. Sir, my first point of order is Rule 110, which is... Sir may have 110. Go ahead. Sir, Rule 110, which is the scope of the debate. The discussion on a motion that the bill be passed shall be confined to the submissions of arguments either in support of the bill or on the rejection of the bill. In making his speech, a member shall not refer to the details of the bill further than what is necessary for the purpose of his arguments. मैंने कहा कि 437 जो गलत नियुक्तियां हुई हैं, जिसको एलजी ने निकाला है, ऐसी नियुक्तियां जो इन्होंने अपने एमएलए, अपने पार्टी के लोगों के रिश्ते नातेदारों को की, जिसमें ना सर्विस कमीशन लिया, ना स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड लिया, ना यूपीएससी की, इस तरह की धांधली इन्होंने की है, असंवैधानिक कार्य किए हैं। इसकी वजह से असीम स्थिति पैदा हुई है। मान्यवर सुप्रीम कोर्ट ने आरआरटीएस वाले मामले में जब इन्होंने फंड का रोना रोया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम्हारे पास विज्ञापन के लिए पैसे हैं लेकिन आरआरटीएस के लिए पैसे नहीं है। ये दिल्ली का विकास नहीं चाहते, मान्यवर, ये दिल्ली को
दिल्ली का विकास नहीं चाहते, ये अपना प्रोजेक्शन चाहते हैं। मान्यवर, इनके 1.5 दर्जन से ज्यादा नेता जेल गए हैं, 1.5 दर्जन से ज्यादा। देखिए, Honorable member will put it on the table. शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मनी लॉन्ड्रिंग को मनी लॉन्ड्रिंग। One second. संदीप कुमार राशन के बदले रेप घोटाले में, लॉ की फर्जी डिग्री पर जितेंद्र तोमर जेल गए। असीम मेंबर Honorable member has already been directed to put it on the table of the house. He will do it. फोर्ड मामले में He will do it. जेल जा चुके हैं। विधायक प्रकाश केजरीवाल जेल जा चुके हैं। इनके नेताओं Mr. की Raghav लिस्ट लंबी है। Chadha, one second. Did you not hear earlier speeches? No, you are right. Just tell me, 1 second. Don't enter into an argument. You have made your point. Take your seat and listen to it. The ruling is, गुप्ता जी, जाने वालों के नाम बताओ। गुप्ता जी, मुझे आपके स्वास्थ्य की काफी चिंता होती है कि नहीं है? आपका वजन ज्यादा है, मनीष सिसोदिया आप बहुत जेल में है एजुकेटेड कि नहीं होते है? हो। सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? जितेंद्र तोमर जेल गए कि नहीं गए? पार्टी जेल गए कि नहीं गए? ऑक्सफोर्ड में अहमद बिल्डर जेल गए कि नहीं गए? अमानुल्लाह खान जेल गए। ये भ्रष्टाचारी और अराजक तत्वों के सरदार हैं। ये अरविंद केजरीवाल इनके सरदार है। मान्यवर, अरविंद केजरीवाल जी जब चुनाव लड़ने गए थे तो उनको पता था कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। मान्यवर, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, लेकिन तब भी इन्होंने चुनाव लड़ा, जीत कर आए। लेकिन चुनाव लड़ा तो जीत कर आए, जिन्हें पता था कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। अब ये दिल्ली के पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री मानकर अपना जलवा दिखाना चाहते हैं। और तो और इनकी एरोगेंस देखिए, इनका मेगालोमैनिया देखिए, कितनी पराकाष्ठा है। ये अपने आप को दिल्ली का मालिक कहते हैं। इन्होंने टीवी पर कहा है दिल्ली का मालिक। क्या बात है। इस तरह के एरोगेंस वाले व्यक्ति पर अंकुश, सेवाओं पर अंकुश निश्चित रूप से केंद्र सरकार का होना चाहिए। मान्यवर, जबकि इस देश के प्रधानमंत्री, उनकी विनम्रता देखिए। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, मान्यवर मेरे 3 मिनट और बाकी है। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी अपने आप को देश का प्रधान सेवक कहते हैं और ये मालिक कहते हैं। ये अंतर है। और इस सोच के अंतर के कारण से माननीय प्रधानमंत्री जी गरीबों का कल्याण करते हैं, दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करते हैं, अर्थव्यवस्था को संभालते हैं, और ये दिल्ली का नाम डुबोते हैं और देश का नाम बदनाम करते हैं। मान्यवर, केजरीवाल जी ऐसे मुख्यमंत्री है। मान्यवर, केजरीवाल जी ऐसे मुख्यमंत्री जिनके पास कोई विभाग नहीं है। मान्यवर देखिए, केजरीवाल जी ऐसे मुख्यमंत्री जिनके पास कोई विभाग नहीं है। ये चालाकी है। इसका क्या अभिप्राय है? ये अभिप्राय ये है कि अगर घपले घोटाले होते हैं, भ्रष्टाचार होते हैं, तो मंत्री जेल जाए, अधिकारी जेल जाए, मुख्यमंत्री साफ बचे रहे। ये चालाकी है। अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते और अधिकार पूरा रखना चाहते। और इनको सपोर्ट कर रहे कांग्रेस के लोग। इनके राहुल जी ने भी यही किया है। राहुल जी भी यही करते हैं ना, पार्टी की जिम्मेदारी लेंगे नहीं, अकाउंटेबिलिटी लेंगे नहीं, अधिकार पूरा रखेंगे। केजरीवाल जी ने राहुल जी से सीखा है या राहुल जी से श्रीमती महुआ माझी, श्रीमती महुआ माझी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं अपनी पार्टी जेएमएम की तरफ से इस नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 के विरोध में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। और हमें लगता है कि यह बिल अलोकतांत्रिक है। आज दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकारों को कम करने का जो प्रयास Mr. Jain, Mr. Nothing will go
उससे तमाम विपक्षी पार्टियां चिंतित हैं। एकाध विपक्षी पार्टियां जो किसी विवशता के कारण खुलकर नहीं बोल पा रही है, वे भी शायद अंदर ही अंदर चिंतित है। लोकतंत्र की खूबसूरती इस बात से है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, न कि केंद्रीकरण। ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अधिनायकवाद को बढ़ाता है। हिटलर और मुसोलिनी ने पावर का ओवर सेंट्रलाइजेशन किया था। सब जानते हैं उसका हर्ष और उनका परिणाम क्या हुआ। अभी जो भारतीय स्टेट का नेचर होता जा रहा है, वह वैसे ही ब्यूरोक्रेटिक स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। दिल्ली में भी अगर ब्यूरोक्रेट्स के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केंद्र अपने हाथों में लेकर उन्हें इतना पावर दे देगी, तो लोकतंत्र के लिए निश्चित रूप से यह खतरनाक होगा। इस बिल के द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री को असहाय और कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के बाद उन दूसरे राज्यों की भी बारी आ सकती है जब जहां विपक्षी पार्टियां सत्ता में हैं। जब केंद्र ब्यूरोक्रेट्स को अपॉइंट करेंगे तो उसी के इशारे पर उन्हीं की आइडियोलॉजी इच्छा के अनुसार वे अपनी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और इससे संस्रोतों का बंटवारा समान रूप से नहीं हो पाएगा। फिर तो जनतंत्र का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। जो पावर स्टेट्स के हाथों डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, उसे अगर सेंट्रल अपने ही अधीन ले लेगा, उस पर कब्जा कर लेगा, तो लोकतंत्र का क्या अर्थ रहेगा। आप सोचिए कि कॉलेज को चलाने के लिए प्रिंसिपल, क्लर्क, नॉन टीचिंग स्टाफ, सबकी जरूरत पड़ती है। और प्रिंसिपल ही चाहे कि हम पूरे कॉलेज को चलाएं, तो क्या चलेगा। उसी तरह वर्तमान केंद्र सरकार केंद्र की रवैये से झारखंड जैसे छोटे राज्य भी भयभीत और चिंतित हैं। उनकी स्वतंत्रता सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। इससे उनकी स्वतंत्रता प्रभावित होगी। पिछले दिनों फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 को पास कर लिया था। आप लोगों ने बिना यह पता किए कि उससे जंगलों में रहने वाले जनजाति आदिवासी इससे कितनी बड़ी तादाद में अफेक्टेड होंगे, इसका उन्होंने विरोध किया था। यह उनके अस्तित्व के लिए खतरा था, लेकिन उनकी संस्कृति भी इससे नष्ट होने वाली है। लेकिन आप लोग ब्यूरोक्रेसी की बात सुनकर इस तरह के कानून भी पास कर देते हैं, बिल पास कर देते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए खतरा है। वैसे ही केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम से चुनी हुई सरकारों को परेशान करने के दृष्टांत विभिन्न विपक्षी पार्टियों द्वारा शासित राज्यों में देखे जा रहे हैं। कई विधायकों को डरा धमका कर, कभी लालच देकर अपनी तरफ करने का प्रयास लगातार सत्ता द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली का यह बिल पास होने पर दूसरे राज्यों के साथ भी भविष्य में ऐसा ही हो सकता है। इस बिल से छोटे राज्यों की सत्ता सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। गलत दिशा में डेमोक्रेसी को ले जाया जाएगा। अफसरों के माध्यम से चुनी हुई राज्य सरकार को में खौफ पैदा करने का यह प्रयास असंवैधानिक है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से बिल का पुरजोर विरोध करती हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सवाल यह है कि जिन्होंने शाबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संसद में बदले जाने पर सवाल खड़े किए थे, उनके लिए आप सुप्रीम कोर्ट की माता कहाँ चली गई। दरअसल यह दिख रहा है कि केंद्र सरकार लोकतंत्र के दूसरे पायों को लगातार कमजोर कर रही है। सारी संस्थाएं खत्म की जा रही हैं। और मणिपुर जैसे राज्यों में जहां पर आप केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार की बात करती है, वहां हम लोगों ने जाकर देखा कि वहां क्या हश्र हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है वहां पूरा आग लगा दी है। और यह हरियाणा में भी हो रहा है। झारखंड को भी बार-बार परेशान किया जा रहा है। श्री अजीत कुमार भुयान 4 मिनट्स। श्री अजीत कुमार भुयान 4 मिनट्स। Thank you, Chairman, sir. It is difficult to place my points in such a short time. So I would like to read because the reading is faster than speaking. Chairman, sir, spirit of our constitution lies in cooperative federalism. Our constitution is not unitary. Dr. B.R. Ambedkar, participating in Constituent Assembly debate, had said, the states under our constitution are in no way dependent upon the center for their legislative and executive authority. The center and the states are co-equal in this matter. He further said, the chief mark of federalism, as I said,
lies in the partition of the legislative and executive authority between the center and the units by the Constitution. This is the principle embodied in our Constitution. It emerges from Constitutional Assembly debates that India adopted a federal model in which union and the states were meant to operate within their assigned legislative domain. The legislative domain of the states is exclusive and cannot be interfered by the union. Sir, federalism is soul of Indian Constitution, and that is how democracy prevails despite anarchical attitude of few leaders. Chairman sir, I stand to oppose the bill not because of political alliance but to empower the smaller states. As we all are aware that similar states of Northeast region and Goa are threatened by the might of the center and they have to depend on the center all this time. Sir, if the mandate of the people will not be honored, how we can claim that federalism is safe in the country? There has been established norms and tradition for the government of Delhi, but suddenly the government led by Modi Shah Dio decide to derail the norms. The party which Modi Shah Dio belonged had been champion of more autonomy to the Delhi government, but now the Dio is banned to bring the Delhi government to the level of municipal government. Sir, several Northeast states have been vying for more autonomy, and there is a high level of fear that they will lose some special provision enshrined in the Constitution if the center continue to concentrate more power at the cost of the states. Sir, what has happened in Sikkim by diluting Article 371 to bring non-Sikkimese subject citizens under tax rebate has agitated the mind of Northeast states. Sir, I conclude by saying that small is beautiful and center should not bulldoze its might on the small entity. The mandate of small and big is the same in democracy, and that is how federalism has been taking part for India and outside India. Thank you, sir. Shri Surendra Singh Nagar. धन्यवाद सभापति जी। 15 मिनट्स। मैं आज दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ। माननीय सभापति जी, केंद्र सरकार को संविधान के तहत जो अधिकार है उसी के तहत ये बिल आज पार्लियामेंट में लाया गया और ये बिल भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान के लिए बनाने के लिए जो समिति बनाई गई उसके चेयरपर्सन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, उनकी भावनाओं के अनुसार ये बिल लाया गया है। ये बिल जिस पर चर्चा हुई, सब लोगों ने अपनी राय रखी, संघीय ढांचे की भी बात हुई, लेकिन यह बिल इस तरीके का संघीय ढांचे में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की अगर बात करें तो पूरी दुनिया के कई देशों में इस तरीके की व्यवस्था है। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, अमेरिका, बहुत से देशों में ये व्यवस्था है और अमेरिका में तो ये भी व्यवस्था है वाशिंगटन डीसी में कि वहाँ कांग्रेस में कोई प्रतिनिधि चुन के भी नहीं जा सकता। और यहाँ तो हमारे आम आदमी पार्टी के जो सदस्य हैं वो यहाँ चुनकर आए हैं दिल्ली से। देश की लोकसभा में 7 सदस्य
लोकसभा के लिए चुनकर दिल्ली से आते हैं। इस तरीके की व्यवस्था पूरे देश में है, लेकिन ये व्यवस्था जरूरी क्यों है? क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक अपना महत्व होता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसके विकास के लिए पूरे देश के लोग, पूरी दुनिया के लोग राष्ट्रीय राजधानी में रहते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए इस बिल को यहां लाया गया है। और इस बिल से फायदा क्या होगा? इस बिल से दिल्ली में उच्च स्तर पर जो शासन प्रणाली है वो बनाई रखी जा सकेगी। इस बिल से भारत सरकार और दिल्ली सरकार की संयुक्त और सामूहिक जिम्मेवारी और लोगों की जो आकांक्षाएं उन्हें पूरा किया जा सकेगा। इस बिल के माध्यम से राजधानी क्षेत्र में पारदर्शी और प्रशासनिक निर्णय सुनिश्चित करने का काम ये बिल करेगा। माननीय सभापति जी, इस बिल को लेकर हमारे विद्वान वक्ताओं ने, हमारे जेठमलानी साहब ने, सिंघवी जी ने, गोगोई जी ने अपनी बात रखी। मैं लीगलिटीज उनके बारे में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात जरूर मैं थोड़ा समय लूंगा, थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा। समय हमारे पास है और समय भी हमारा है, आने वाला समय भी हमारा है। आपका खत्म हो गया, ये समय भी हमारा, आने वाला समय भी हमारा है, इसकी चिंता आप मत कीजिए। माननीय सभापति जी, मैं कई बार चर्चा करता हूं, मुझे भी एक बार इस देश की लोकसभा का सदस्य रहने का मौका मिला। वो दौर 2000, वो पार्टी वो थी जब भ्रष्टाचार का आरोप लगता था, यूपीए की सरकार थी, हम भी उस पर आरोप लगाते थे। थोड़ा करेक्शन। अभी मैं अभी आपके पास भी आ रहा हूं, रुकिए आप थोड़ा इंतजार तो करिए आप। अभी इंतजार करिए। माननीय सभापति जी, मेक योर पॉइंट। 2009 और 2014 के बीच इस देश में कांग्रेस के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार थी कि मैं कहूं तो इस देश के इतिहास में सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार के किसी पर आरोप लगे वो 2009 से 14 के बीच में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की जो सरकार थी उस पर आरोप लगे। मेक योर पॉइंट। लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगे और पूरे समय 5 वर्ष तक लगातार घोटालों की चर्चा होती रही। और उसके बाद इस देश में भ्रष्टाचार को लेकर एक आंदोलन हुआ, और वो जब आंदोलन हुआ, जंतर मंतर पर वो आंदोलन हुआ। अन्ना हजारे जी, मैं उसी पे आ रहा हूं, भूमिका अभी रुकी आप। अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में वो आंदोलन हुआ और कुछ आंदोलनजीवी उस भ्रष्टाचार के आंदोलन के खिलाफ, जिन्होंने इस देश के दामाद पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, इस देश के दामाद पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, और वो दामाद कौन है आप अच्छी तरीके से जानते हो। और वो आरोप हमने नहीं लगाया, वो आरोप जो आज आम आदमी पार्टी जो उसके नेता है उन्होंने लगाया था। और आज आरोप लगा के गलभाई करके साथ बैठे हैं आप। ये आरोप हमने नहीं लगाया था। आज यहां पर हमारे दोस्त कृषि सिवा यहां नहीं है, हमारे मित्र कृषि सिवा यहां नहीं है। कृषि सिवा जी आप ध्यान रखिए, कृषि सिवा जी 2G का आरोप, ऑनरेबल मेंबर का तत्कालीन ऑनरेबल मेंबर कौन था? ऑनरेबल मेंबर किसने लगाया उस पर आरोप? ऑनरेबल मेंबर तत्कालीन ऑनरेबल मेंबर जो आज यू डोंट हैव टू एड्रेस देम। ऑनरेबल मेंबर कन्फाइंड टू डेकोरम,
address to the chair. Please address to the chair. मुझे नहीं लगता माननीय सदस्यगण, उस समय माननीय सदस्यगण, हो सकता है एक सेकंड हो सकता है जी कि मेरा चेहरा बहुत आकर्षक न हो, नहीं है सर, पर नियम की आवश्यकता है कि मेरे को देखकर आप बात कहिए। सर अगर आपका चेहरा नहीं देखूंगा तो मैंने कहा है आई एम अ वेरी गुड ऑथेंटिक रिफ्लेक्टर, यह पूरी पहुंचेगी। इधर देखिए माननीय सभापति जी, बोलिए। माननीय सभापति जी, उस समय कांग्रेस के नेतृत्व वाली जो सरकार थी उसमें जो मंत्री थे वो डीएमके के थे और उन पे आरोप किसी और ने नहीं लगाया था। उनके खिलाफ अगर पीआईएल किसी ने डाली थी इधर तो पीआईएल डाली थी। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने पीआईएल डाली थी। गोल घोटाले में किसने पीआईएल डाली थी? कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन पीआईएल किसने डाली? वो और किसी ने नहीं डाली थी। तो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने पीआईएल डाली थी। ये है आपका चेहरा। और आज सभापति जी और आज हमारे मित्र ऑनरेबल मेंबर, मैं लालू जी का बहुत सम्मान करता हूं। मेक योर पॉइंट। सर अच्छा होता हमारे मित्र झा साहब जब बोले तो 2011-12 की बात, 13 की एक बिल आया था लोकपाल का, मुझे ध्यान है 13 में आया था। जो 2013 में जो बिल आया था उसमें अगर आप आम आदमी पार्टी की सच्चाई जो वर्तमान नेता हैं और आज जो आंदोलन जीवी हैं, अगर उनके बारे में उनके विचार सुन लिया होते तो आज आप इनके साथ नहीं बैठे होते। माननीय सभापति जी 2000 जब ये आंदोलन चल रहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी के जो आज नेता हैं उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी। उस भ्रष्टाचारियों की लिस्ट में उस समय की यूपीए की जो सरकार है उसके 8 मंत्रियों के नाम थे। और ये आरोप हमने नहीं लगाया था, ये आरोप किसी और ने नहीं लगाया था, ये आरोप लगाया था उस समय के आंदोलन जीवी जिन्हें कहते हैं, उन लोगों ने उससे तत्काल यूपीए की जो सरकार है उसके मंत्रियों पे लगाया। टेक योर सीट, ऑल ऑफ यू टेक योर सीट, ऑल प्लीज टेक योर सीट, प्लीज लेट देयर बी पिन ड्रॉप साइलेंस। गुड प्रोफेसर, you are raising a point of order. Order under 261. There has been a tradition One second. 261. There has been a tradition in the House that the members who are not members of this House, they are not referred to. Today, you have referred to Shri Lalu Prasad Yadav. Then you refer to. One second, please. Please take your seat. Take your seat. Sir, So your point of order is expunction. Expunction of words, because references have been made to lot many people who are not members of this House. This is going against the traditions of this House.
take. Would you kindly please have some patience? Maintain order. 1 second. The honorable member has raised a point of order. Honorable members, honorable member Professor Jha has raised a point of order. Similar point of order was raised by leader of the opposition. And when a point of order is raised by leader of the opposition, it is raised at the highest level. I had reserved my ruling on that, and then I had come back to the House. I had indicated to the House everything about the issue. Perhaps the professor has not read it. You read it, you'll get your answer. Please go ahead and maintain order. Please. माननीय सभापति जी, address the chair. Yes, yes. No, every time Mr. Nagar, you look at that side. I will take care of it. Look at this I will side. take care of it. And make your point. It will be more impactful. सभापति जी, केवल मैं सिर्फ मैं ये जिक्र इसलिए किया कि आखिर इस बिल को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में मैंने बात किया। आपको भी पढ़ा रहे हैं माननीय सभापति जी। उस आंदोलन के बाद वो आंदोलन ने खत्म हुआ और एक नई पार्टी का जन्म हुआ, और उस नई पार्टी का जब जन्म हुआ तो उसके नेता उस समय जो थे, उस समय जो अब नेता हैं उनके, उन्होंने एक बात कही थी, और आश्चर्य की बात है कि बच्चों की भी कसम खाई थी। अरे भाई, और बच्चों की कसम खा के ये कहा था कि मैं कभी जीवन में कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करूंगा। क्या हो गया? ये खाई थी कसम। और इसके बाद हुआ क्या? उसके बाद मोदी प्रदेश की जनता ने उन पे विश्वास किया, उनको आपको तकलीफ क्या हो रही है? कांग्रेस में कभी नहीं आऊंगा, किसी में जाएंगे, कांग्रेस में नहीं आऊंगा। Mr. Leader of the House. अरे कोई नहीं पढ़ा, आराम से। Conclude. Please conclude. चेयरमैन साहब, प्रदेश की जनता ने उन पे विश्वास किया और उन्होंने वादा किया था कि मैं भ्रष्टाचार को जड़ से निपटा। बहुत से वादे भी उन्होंने किए, प्रदेश की अपेक्षाएं भी थी। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, और उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देगी। लेकिन आप दुर्भाग्य से आज मुझे कहना पड़ रहा है कि भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार में उनका आधा मंत्रिमंडल जेल में जरूर चला गया। और वादा, और आखिर इसकी जरूरत क्यों है? यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र रहना क्यों चाहिए? सभापति जी, जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, और महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए इस पूरे दिल्ली के क्षेत्र में सीसीटीवी लगाने का काम करेंगे। लेकिन आज तक सीसीटीवी नहीं लगे, यहाँ महिलाओं को आज असुरक्षित है। और जब कोई घटना घटती है, जब कोई आरोप घटना घटती है, तो इसकी जिम्मेवारी वो, क्योंकि पलटने में बहुत बड़े पलटीवाल हैं, वो पलटने में बड़े माहिर हैं, वो तुरंत पलट जाते हैं, कहते हैं मुख्यमंत्री तो मैं हूं, महिलाओं की सुरक्षा है वो गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी। कंक्लूड नाउ, कंक्लूड। और इसके बाद लोकपाल में अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने लास्ट 1 मिनट वादा किया कि 30,000 बेड हम यहाँ बढ़ाएंगे। हमारा खत्म हो जाएगा तब आए। सर, जब कोविड आया, ये क्यों जरूरी है कि ये केंद्र शासित प्रदेश, जब कोविड आया
जब ऑक्सीजन की कमी इसमें पड़ी तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां नहीं गए, इस देश के गृह मंत्री ने जाकर इस हॉस्पिटल जाकर व्यवस्थाएं देखी और ऑक्सीजन की व्यवस्था इस प्रदेश की जान बचाने का काम अगर किसी ने जिम्मेवारी उठाई तो दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, इस देश के गृह मंत्री ने कुछ जाकर उठाने का काम किया। थैंक यू। अभी इसके बाद अभी एक बात कहकर सब मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। हमारे चले गए हमारे राघव जी, वो कह रहे थे कि गृह मंत्री जी ने प्लीज कंक्लूड नाउ। पार्टी का सुपारी पार्टी, प्लीज कंक्लूड नाउ सर। एक लास्ट में हाफ अ मिनट। सुपारी पार्टी का है, मैं बताना चाहता हूं सुपारी पार्टी। हाफ अ मिनट, 1 मिनट बता दो। अच्छा ठीक है। मैसेज फ्रॉम लोकसभा सेक्रेटरी जनरल। Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 7th August 2023 passed the Coastal Aquaculture Authority Amendment Bill 2023. I lay a copy of the said bill on the table. Sri Derek O'Brien. Sir, I stand here to strongly oppose this bill. Sir, Mr. Narendra Modi is the first Prime Minister to be born in independent India. It is a unique privilege. Mr. Narendra Modi is a child of federalism. He was the Chief Minister. And we are told a very successful one, some people say he was not good, but whatever, he was Chief Minister before he came to Delhi. He is a child of federalism. Why would a child of federalism mutilate federalism? Why? Why would a child of federalism come to Parliament and in the last 3 years ensure that about 1/3 of the bills passed here in Parliament is anti-federal? Why? Why would a child of federalism sanction 40,000 crores as a special budget for education, for higher education? And from those 40,000 crores, why would a child of federalism give only 700 crores to state universities? Every bill, sir. Sir, protect me because the time is limited. Sir, 7 minutes. Mr. Modi and his cabinet believe in transactional federalism. And what do I mean by transactional federalism? Quick message first from somebody the BJD might listen to. Mr. Biju Patnaik. Mr. Biju Patnaik said, the center will also have to truly respect the federal nature of our constitution, quote unquote. Sir, you don't do transactional federalism with Mamata Banerjee in Bengal. It won't work. We will oppose your bill, whether you give us the 12,000 crores which you owe us, 7,000 from Manrega, and 4,000 crores otherwise. Sir, transactional federalism chalega nahi. October the 2nd, to fight for the rights of the states and for what is our right, we will not beg. We will have a big rally here for our 12,000 crores. Sir, I want to ask, you are sending delegations, 160 delegations in 30 months. Every time, what do you do in the BJP states? If 3 dogs are barking in Chennai, you will send a delegation there. If 4 cats are fighting on the street in Bengal, you will send a delegation there. My question is, how many delegations do you send to Uttar Pradesh, which has had the highest number of murders in this country? How many delegations do you send to Assam, which has the highest crimes against women? How
many delegations do you send to Madhya Honorable Pradesh, member, which has the crimes against children? One second. One second. One second. Everyone can speak whatever you want. One second. Start to speak on the bill. One second. Please, one second. Please, take your seat. Take your seat. Please, better. Yes, sir. Honorable member, one second. Honorable member, you perhaps have to be reminded that you are speaking on a subject, and you would recollect that in last 20 minutes, 3 such points of order were raised and attention was invited. It is good for you to make a speech that can be impactful perhaps outside. Here the issue is very categorical. Would you please use your energy and intellect to focus on the issue? Please do that. Sir, please. This is a political house. We will make political points. They cannot be allowed a free run. Sir, yesterday, or the last time... No, you will make a political point, The Home Minister but you of can't India get away from the said subject. we have all come together. No, he said we have all come together. As India Jitega Bharat. India Jitega Bharat. 1 minute, sir, let me finish. Sir, don't interrupt my flow. No. Mr. Derek, this is not the way to address the chair. Take your seat for a minute. Addressing you. Take your seat. I had told you, one second, I had told you repeatedly, don't engage into this activity. This does no good to anyone. We in the house have to maintain some kind of decorum, at least for the chair. I have given you floor. One second, take it. I hope sir, you will believe in decorum. Sir, I'm talking on the to subject, you. on issue. Go I'm ahead. talking to you because we've all come together according to one theory is because we are all for corruption. Look who's giving us lectures on corruption, sir. This government has 3 most important ministers. The PM, the HM and the WM. He's not here today, the WM, the washing machine. Sir, let me tell you. No, sir, let me tell you. DilliTak. Sir, please let me tell you. You cannot. No. Sir, please. No. I will not allow these theatrics. Sir, you cannot interrupt. Sir, please allow me to speak. Not these theatrics. Sir, what theatrics? This is not the way to engage into this kind of theatrics. Sir, what happened in Maharashtra is theatrics. No. You are in the process. Ridiculing constitutional functionaries by equating them with a washing machine. No, I did not. What are you saying? Sir, what is going on? Sorry, Mr. Delagobrin. What, sir, only if you don't keep... Sir, do you want to clock the time down? If you don't keep to the subject, you may forfeit your right to make an address. You can't do it. You have to confine to the rules. Sir. Within the rules. Sir. This is not done. Sir, this is just not done. My time. Sir, conclude now. This is a government which talks about corruption. Sir, in Maharashtra, 3 weeks ago, these same people were saying that side has got corruption. Now these same people are saying you have always belonged to us. In other words, what? You are supposed to go to jail. Now you are like us. So both of you should be in jail actually. Because that's the logic. Sir, corruption, this is the state of corruption. This government, yesterday we heard in Lok Sabha, is telling us about dynasty. I'll give them a free idea for dynasty. You bring a bill in parliament stopping every member from a family, saying only one member, one person. Will they bring that bill in parliament? Sir, they will not. They will not. Sir, let me finish. Sir, let me. See, sir. Protect me, sir. Sir, protect me. 1 minute. Sir, protect me.
seat. Take your seat. Mr. Tiwari, please. We want decorum in the house. Please. One second. Take your seat. Take it. Take your seat. Take your seat. Would you please take your seat now? Honorable members, we started discussion today with an expectation and with fructified also that the decorum will be there in the house. Schedule once. Can't you wait for some time? I'll conclude. No, before you conclude, one second. Decorous and conclude. I want to be decorous and conclude. Don't conclude in a manner to put everything in disorder. Right, sir. I will not say. Good enough. Go ahead. I will not say anything controversial. Please. Sir, I will not say anything. Last 1 minute. Very good, sir. Last 1 minute. We have a clear difference of opinion here on this bill. That's why even a former Prime Minister has found it important enough to be present here to come and vote with us on the bill. We acknowledge that. That's why a member of the JDU has come in an ambulance. So we believe, sir. And the last, Mr. Shibu Soren is here, also unwell. He's come here, sir. So I agree. We have a different view on the bill. It's our view, it's their view. Sir, before we end, I want 15 seconds. Sir, 15 seconds. 15 seconds. Thank you. Miss Kavita Patidar. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। This is conspiratorial. Mr. Derek O'Brien, your conduct in the House has been most ignoble. And this has become your habit. And you are doing it as a part of strategy. And you think you will enjoy publicity outside. You have reversed this House. Sit down. Take your seat. Sit down. Sit down. Take your seat. I'll name you. Honorable members, you have seen a spectacle now. Are we in for such kind of conduct? Here is a member who rises suddenly and engages into dramatics, theatrics. Are you here for this? Is it your oath? And is it what the leader of opposition has indicated to me that we will have a discussion of this nature? Sir, such outsmarting never pays. I had good interaction with leader of the opposition and leader of the House. How can we countenance such a conduct? We are subject matter of ridicule outside. Here is a member only to garner personal publicity, to make his presence felt, is engaging into this activity. I take a very strong note of it. And Mr. Derek O'Brien, bear this in mind. Already you are suffering proceedings. And the proceedings are being suffered by you because your demeanor was ignoble. Your demeanor does not justify the position you hold. You are required to exemplify your conduct. And this is what you do. What happens to the consensus we had in the House? That on this issue, we will have sober discussion. You have upset the entire decorous ecosystem of this House. You have done it for a purpose. Miss Kavita Patidar. Miss Kavita Patidar. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। सर्वप्रथम मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को बहुत धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने इस संशोधित बिल को सदन में रखा। माननीय महोदय, एक तरफ माननीय देश के प्रधानमंत्री है, जो देश के हित में उनकी रीति है वैसी उनकी नीति है। दूसरी तरफ ये विपक्ष है
जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं पश्चिम बंगाल पे गई थी अपनी पार्टी के निर्देश पर। वहां पर मैंने देखा था कि किस तरह से वहां पर ये लोग आपस में लड़ते हैं और वहीं बेंगलोर में जाकर गठबंधन करते हैं। वही दृश्य यहाँ सदन में भी है। हम रोज इस सदन में उपस्थित होते हैं, विभिन्न बिलों पर चर्चा करते हैं, लेकिन इन्हें सदन से कोई लेना देना नहीं है, सदन की कार्यप्रणाली से कोई लेना देना नहीं है। पूरे वक्त विपक्ष का एक भी व्यक्ति सदन में उपस्थित नहीं होता है। ये बात सिद्ध करता है जो माननीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा में कही थी कि इन्हें देश की जनता के हित से मतलब नहीं है, सिर्फ इनके गठबंधन से मतलब है। इनके ही नेता ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि मैं दिल्ली में भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, मैं न गाड़ी लूंगा न मैं बंगला लूंगा। और करनी और कथनी में अंतर देखिए, दूसरी तरफ शीश महल खड़ा हो जाता है जिसके भ्रष्टाचार की कहानी भाई सुधांशु ने बहुत अच्छे से इस सदन में रखी है। मैं माननीय महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत से संविधान संशोधन हुए हैं और 69 संविधान संशोधन भी ये लोग ही लेकर आए हैं और उसी के तहत अनुच्छेद 229 A3B के तहत संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए उससे संबंधित किसी भी विषय के लिए कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। मैं बालकृष्ण रिपोर्ट की भी बात करना चाहूंगी जिसमें यह साफ कहा गया है कि दिल्ली की कार्यप्रणाली और सेवा प्रणाली केंद्र सरकार के अधीन होगी। अभी इन्होंने बहुत से हमारे अपनों की याद दिलाई, कुछ याद मैं इनको भी दिलाना चाहूंगी कि उस संविधान संशोधन में तत्कालिक गृह मंत्री जो कांग्रेस के थे, उन्होंने इस बाल कृष्ण समिति की रिपोर्ट को स्वीकार किया था और अपने वक्तव्य में कोड किया था कि हम इसे अपनाते हैं। लेकिन ये लोग नहीं अपनाएंगे। ये लोग इसलिए नहीं अपनाएंगे क्योंकि इनका सिर्फ हंगामा करने का मकसद है। ये देश के हित की बात कभी नहीं कर सकते। अभी ये लोकतंत्र की बात कर रहे थे, अपने अधिकारों की बात कर रहे थे, जबकि सबसे बड़े लोकतंत्र की हत्या तो कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर की थी, जिनको ये लोग भाई 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 कहते हुए यहाँ पर संगठित होने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ अभी एक सदस्य ने यह सदन में जवाब दिया था कि दिल्ली के विजय से केंद्र की सरकार विचलित हो गई है। माननीय महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि देश की करोड़ों जनता ने माननीय मोदी जी को देश का प्रतिनिधित्व करने का, नेतृत्व करने का अवसर प्रदान किया है। वो दिल्ली की विजय से विचलित नहीं है, बल्कि दिल्ली की आप सरकार की कार्यशैली से विचलित है, इनके भ्रष्टाचार से विचलित है, इनके कुकर्मों से विचलित है, दिल्ली की जनता के कल्याण के कारण विचलित है। आज महाभारत का भी वो दृश्य की बात कही गई, मैं इनको भी बताना चाहूंगी कि महाभारत में एक दृश्य और है, एक वक्तव्य और कहा गया है कि जब जब इस धरती पर अधर्म होगा तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ेगा, धरती पर आना पड़ेगा। उसी प्रकार दिल्ली की आप सरकार के अधर्म को मिटाने के लिए मोदी जी को आना पड़ेगा, माननीय अमित शाह जी को आना पड़ेगा, संशोधन बिल लाना पड़ेगा और इस संशोधन बिल के आधार पर दिल्ली की आप सरकार के अधर्म को मिटाना पड़ेगा। ये केंद्र की सरकार पर आरोप लगाते हैं। ये तो वही बात हुई कि जिनके खोटे सिक्के नहीं चले बाजार में, वो कमियां निकाल रहे हैं सोने के किरदार में। ये सोने का किरदार है, कितनी भी आग लगा लो तब कर और निखर कर ही बाहर आएगा। माननीय महोदय, मैं पुरजोर इस बिल का समर्थन करती हूं और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी को दिल्ली के इस विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखकर गंभीरता पूर्वक इस बिल को लाने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। और अंत में इतना जरूर कहना चाहूंगी कि धारा 370 को हटाकर देश को जोड़ने वाले हैं हम। अब आपकी नीतियों से देश टूटने नहीं देंगे। धारा 370 को जोड़कर, धारा 370 को हटाकर देश को जोड़ने वाले हैं हम। अब आपकी नीतियों से देश को टूटने नहीं देंगे। ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कुछ अलग है जनाब। ये आपको दिल्ली लूटने नहीं देंगे, ये आपको दिल्ली लूटने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री रामदास अठावले। Please observe silence.
सभापति महोदय, ये सभागृह में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल पर चर्चा हो रही है। नहीं, भारत के संविधान ने दिल्ली केंद्र के सरकार को जो अधिकार दिए हैं वो अधिकार छीनने की कोशिश हो रही थी और इसीलिए माननीय अमित भाई को ये बिल लाना पड़ा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। इसी सेंट्रल हॉल में रोज संविधान सभा होती थी और उसमें दिल्ली जो है केंद्र शासित थी और दिल्ली को मतलब दिल्ली सरकार को मतलब केंद्र सरकार को दिल्ली को हैंडल करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। ये संविधान सभा ने पास किया है। मैं कांग्रेस वालों को पूछना चाहता हूँ कि क्यों आप आपको सपोर्ट कर रहे हैं? मतलब आप लोग संविधान को मानने वाले हैं, साहब बोलते हैं। आपने 70 साल तक राज किया है। जब आपका राज था तब भी मतलब अधिकार आपके पास थे। जब आपकी सरकार थी तब वो अधिकार आपके पास थे। दिल्ली में जब बीजेपी की सरकार थी तब भी मतलब अधिकार केंद्र सरकार के पास थे। दिल्ली में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी अधिकार केंद्र सरकार के पास थे और आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला, अच्छी बात है। केजरीवाल जी हमारे अच्छे मित्र हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे साहब ने आंदोलन शुरू किया, उसी आंदोलन में वो भी रहे। उसके बारे में हमको बड़ा आदर है कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने आंदोलन किया। लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि अमित भाई का इतना अच्छा आ गया है बिल, अमित भाई का इतना अच्छा आ गया है बिल, लेकिन सामने वालों को हो रहा है फील। नरेंद्र मोदी जी के पास है बहुत ही अच्छी बिल, नरेंद्र मोदी जी के पास है बहुत ही अच्छी बिल, लेकिन दिल्ली में हो रही है दारू के ठेके की डील। माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की बहुत ही अच्छी जम गई जोड़ी। माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की बहुत ही अच्छी बन गई है जोड़ी। फिर कांग्रेस वालों की और आप वालों की कैसे आगे जाएगी गाड़ी? नरेंद्र मोदी जी जानते हैं जनता की नाड़ी, नरेंद्र मोदी जी जानते हैं जनता की नाड़ी, इसलिए बढ़ाई है मैंने दाढ़ी। तो ये जो बिल है नहीं ठीक है। सभापति महोदय, ये बिल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान की रक्षा करने वाला ये बिल है। मैं सभी सामने वालों को बताना चाहता हूँ कि आप सब लोग एक साथ आए हैं, अच्छी बात है। मैं भी आपके साथ था, अब मैं नहीं हूँ, तुम उनके साथ क्यों जाते हैं? तो ठीक बात है, आप सब लोग एक साथ आए हैं। लोकतंत्र में आपको अधिकार है, लोकतंत्र में आपको हमें हराने का अधिकार है, हमको तुम्हें हराने का अधिकार है। तुम इनको हराते हराते सत्ता पर बैठे। अब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए हैं। नरेंद्र मोदी जी किसका विरोध नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब का संविधान बदलने वाले नहीं है। नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब के संविधान की सुरक्षा करते हैं और इसीलिए मैं आपको ऑनरेबल मिनिस्टर, मुझे लगता है कि सर ये जो बिल है भी आप लोग बिना मतलब हंगामा करते आप हंगामा करके बैठो, उधर ही बैठो, हम इधर बैठने वाले हैं। तो इसीलिए आप शांति से चर्चा होनी चाहिए, एक दूसरे का सुनना भी चाहिए। और आप जब से आए हैं तब आप डांटते भी हैं, सब पे प्यार भी करते हैं। हाउस भी चला रहे, बहुत अच्छी बात है। हाउस भी चलना चाहिए, हाउस भी चलना चाहिए और 2024 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार भी चलना चाहिए। मतलब ये सरकार भी हमारी चलेगी और इसलिए मैं मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, मेरे पार्टी की तरफ से इस बिल का समर्थन करता हूं और अपोजिशन को भी मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोगों ने भी इस बिल का समर्थन करना चाहिए और ये बिल एक मत से सम्मत होना चाहिए। ये मैं आपको अपील करता हूं। जय भीम, जय भारत। Honorable members, as per the list of business, the statutory resolution disapproving the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Ordinance 2023 was listed in the name of 12 honorable members.
As per practice and parliamentary conventions, the names of the listed members are called by the chair successively, and the member who moves the resolution becomes the mover of the resolution, and the rest of the names thereafter become infructuous. The mover of the resolution also gains the right to reply after participation of members in the discussion. In the instead case, Shri A.D. Singh has moved the statutory resolution, and therefore I now call upon Shri A.D. Singh to reply to the discussion. Thereafter, the Honorable Minister will reply to the debate. Shri A.D. Singh. Sir, with your permission, I move the statutory resolution that the House disapproves the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Ordinance 2023 brackets number 1 of 2023 promulgated by the President on 19/5/2023. I will start with the Constitutional Bench in DC Wadhwa versus State of Bihar has held that the power of the executive to promulgate an ordinance should not be perverted to serve the political ends. And I heard the debate from both the sides, from our side and from the side of the ruling party. And it reminds me of the BJP party saying that we are a party with a difference. Hence, I really congratulate the Honorable Home Minister that you have brought a similar bill with a change, which has never occurred in any democratic setup. And I will not repeat many things that Singhvi ji has said or Chidambaram ji has said and many other members have said, because it will be too repetitive. But the most peculiar, I want to ask the Honorable Home Minister, then what is the sanctity of a party manifesto? A party manifesto says that if we come to power, we will try to fulfill these aspirations of the people. So the bill is so peculiar that that triple chain about whom many of our colleagues in the opposition have said, that means that it will be the work of the Lieutenant Governor and the Union Home Ministry to implement the manifesto of the Aam Aadmi Party, because as it is very clear that the bureaucrat will not listen to the Chief Minister and his other people. And in any case, I have a very low opinion of the IS in this country, because a whole lot of my friends have been at the helm of power. I don't want to name them. So the steel frame of British imperialism is not even the plastic frame of Indian democracy. So besides, the service is such that I am sure I am safe, and I agree, sir. So IS denotes all these three things. And they are too, instead of subservient to the social goals of the society, they are normally subservient to the all legal and not so legal acts of the ruling party, whether it is our side or whether it is that side. So it is a very peculiar situation. We talk of the ruling party, talks of, and we also talk of the democratic values that was enshrined in Bihar's Lichvi dynasty. We shout all over the world that we are the largest democracy. One of the opposition, one of the ruling party ladies just mentioned that we did a great job by abolishing 370. But let me tell you, let me brief the House that under the Congress rule and even under Atalji's leadership, the 370 was diluted so much that it only remained a piece of paper. And unless we win the heart of the people of Jammu and Kashmir, nothing, because after 4 years we are still making people house arrest there. So I do not know whether we want to serve as a democratic nation, or we want to
put it at, we really want to finish it, the democratic sentiments. One of our senior ministers talked about how much money they were giving for different things to Delhi government, but unfortunately they never tell us that in the last 9 years, we have written off 12 lakh crores of corporate debt, which money could have been usually used in enhancing irrigation, welfare schemes, making a cold chain, but nothing. And let me speak, sir. Resolution is mine, so you give me the opportunity to speak. So instead of going for a development, and who were these corporates? Because once the banks don't do a proper due diligence, I come from Bombay as an industrialist, have lunch or dinner with the relevant people, and take out 10,000 crores. So 12 lakh crores is a lot of, and I saw the list, which was, and the recovery, after recovery, it was 12 lakh crores. And in most of the cases, the recovery was just 10%. So I do not know which direction are we going. One side we are saying that, 1 minute, no, allow me to speak, Honorable member, no, allow me to speak. You are getting into irrelevance. One side, I'm just concluding. It is expected of a senior member